बेहतर होता है आराम से
Assalamualaikum. Good afternoon. July for Ladakh. It's brighter in between. It's cloudy at times. It's Muraad taking on Royal Kasbiyar. What a time here at the center of Pulwama. All set. Everything is in readiness. I get the two cliques, one to the right of me and one to the left of me. Are you ready? Hi, folks. It's time for action in the middle. Nazir, ball number one isn't that far. It's Asif Rasool who's shaping up, is warming up. Your comments regarding this all-important grand finale, the spectacle, biggest extravaganza. अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये फाइनल मुकाबला रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रारंभ होने जा रहा है। मुराद की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी है और मैच की पहली गेंद लेकर के आसिफ रसूल। इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत बेहतर गेंद थी। हालांकि दो बल्लेबाजों ने प्रारंभ किया है मुराद 7 स्ट्रेट के लिए, इरफान और उनके साथ सरशील अब्बास। ये प्रारंभिक जोड़ी जहां तक मुराद 7 स्ट्रेट का सवाल है। और वहीं पे अगर देखा जाए तो रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार की टीम को गेंदबाजी का अवसर मिला है, भारी मात्रा में दर्शकों उपलब्ध, अच्छी खासी क्षमता इस मैदान की और पूरी क्षमता के अनुकूल बना हुआ यह मैदान इस फाइनल मुकाबले का आनंद लेने के लिए। और इधर हमारे श्रोता भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। आसिफ रसूल ने गेंदबाजी प्रारंभ की है एक स्लिप के साथ अगली गेंद लेकर के, और इस बार इरफान के लिए बहुत बेहतर गेंद थी, वापस खेला बॉलर की दिशा में सम्मानजनक रूप के तरीके से। और ऐसे में रन बनने की संभावना थी नहीं, रन संख्या में अभी कोई वृद्धि हुई नहीं है। खाता खोलना बाकी यहाँ मुराद 7 स्ट्रीट की टीम को। अगली गेंद आसिफ रसूल के, इस बार हवा में गेंद उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं और संतुलित होते हुए क्या कैच लपक पाएंगे? जी नहीं, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर कुछ रन जरूर बटोर लिए। पहला रन खाते में जुड़ता हुआ खाता खोला मुराद 7 स्ट्रीट का, एक बगैर नुकसान के फाइनल मुकाबले की पहली पारी में। First runs on the board. Lara is off the mark. That was in there for a while. He had his heart in his mouth. But that one, it flown away and dropping in no man's surface without any harm. It's one for none in over number one. You're watching Jiggy Sports Time Facebook and it's moreover live on YouTube channel. In the meantime, and look at that grandstand. It's filled. It's like a tons in solid. In the meantime, Asif Rasool is going to continue from that far end. It's rucks and roar. It's rumble and bumble. Look at the crowd in good numbers, many folds around the center. It's hot and humid climate here at Pulwama Sports Field. In the meantime, Asif Sarshil Abbas standing tall, wanted to guide it, is beaten in the end. It is a dot delivery, shaping for that glide up the back foot, trying to run it down to the third man. In the meantime, he's beaten on that occasion. It's a dot delivery. Sarshil, he's in good form. He was struggling in the tournament, but later on he found some touch here. The next one hits him high on the pad, no harm done, trying to flick it round the corner, doesn't connect, unable to lay bat onto the ball. It hits him high above the knee roll, so no harm done. Score a man, a static one without loss. The next one, good delivery again. There is a shot for LBW and it's turned down, and Asif Rasool isn't happy. Look at that one and listen into the noise again. What a moment, what a delivery. Scared him up. It was an excellent ball on that occasion and surprising him, cramping him for space. And what a ball in the very first over with a new ball and cloud is over. This is going to put pressure on the batters and ball is going to do something. The new ball is going to be crucial and they need to battle it out in the first 6 overs. तो देखिए शुरुआत काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है और हर गेंद का, हर पल का, हर विकेट का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं दर्शक। और ऐसे में एक बेहतरीन और शानदार मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। ये फाइनल मुकाबला रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का, एक बगैर नुकसान के। हल्के शुरुआत आसिफ रसूल ने की जहां तक गेंदबाजी का सवाल है। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम को एक अच्छी शुरुआत चाहिए, एक बेहतरीन मजबूत आधारशिला प्रदान करनी होगी। सरशील अब्बास जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज है, एक दिग्गज खिलाड़ी है, पर अनुभव उनके पास से अनुभव की कमी नहीं है। पर शुरुआत किस प्रकार की देंगे ये एक मानसिकता उनकी तय करेगी, क्योंकि इरफान लारा भी एक विस्फोटक बल्लेबाज है। तो शुरुआत काफी महत्वपूर्ण रहेगी, शुरुआत काफी मायने रखने वाली है यहाँ पर टीम के लिए। मुराद की अगर हम बात करें, ये लगातार तीसरा फाइनल मुकाबला इस वर्ष वो खेल रहे हैं रॉयल क्रिकेट क्लब के सामने। और ऐसे में एक दबाव जरूर होगा इस पिछले मुकाबलों के उस प्रदर्शन का। और ऐसे में अगर क्राउड की बात करें, भारी मात्रा में जनसंख्या यहाँ उपलब्ध है, अच्छी खासी मात्रा में दर्शक चारों ओर जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए, खचाखच दर्शकों से ये मैदान
मैदान भरा हुआ रॉयल नॉकआउट टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का यह फाइनल मुकाबला और ऐसे में 1 रन बना है। इन परिस्थिति में नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। एक ओवर की गेंदबाजी इश्तियाक रसूल एक अनुभवी गेंदबाज है, दिग्गज ऑलराउंडर है, वो शुरुआत करेंगे और उनके सामने रहेंगे बाएं हाथ के इरफान लारा। एक बगैर नुकसान के 1 ओवर की गेंदबाजी। After the completion of over number 1, it's 1 without loss. Irfan Lara opened his account. On strike is going to be Lara again with a slip in place, packed, coordinated offside. Nag for the first time in this match, and look at that one, nicely worked away onto the onside, down to the short mid-wicket area. There is possibility of a single. This is good cricket from Irfan Lara. He's off the mark straight away and he's off strike with that single. It's 2 for none as we are in over number 2. They need a perfect start. They need a good start here at the centre in the finals. They lost 2 against the Sam side. They lost in Jabalpura. They lost in MKT. And they will try to refresh it again, as you have to work on it. But in the meantime, bowler is getting ready. He's back to the top of his bowling mark. Ishtiaq Rasool now operating. And that one, standers tall. Pulls it and finds a man in place. Not for runs. But in the end, 2 batters decided to scamper through. And Sarshil pinch a single. He's underway. He's up the mark. He's up and running. With that single, there is addition in score 3 for none in over number 2. Nag is an easy customer. There is little sunshine on again. It is a mix-up. It is a kind of sun playing that hide and seek. It's cloudy and it's bright in the meantime. 3 for none in over number 2 with a slip in place. There is a man at backward of scare. That one just below that rib cage area. He was trying to run it down to the fine leg area, trying to use that fine tickle. But nonetheless gets 1 for that. 4 without loss in over number 2. दूसरा ओवर पर एक वर्तमान में चलता हुआ इश्तियाक रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 रन बने हैं और ऐसे में देखना होगा मुराद की टीम एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता, यहाँ पे एक ठोस शुरुआत देने का प्रयास होगा सरशील अब्बास और उनके साथ इरफान लारा का। अच्छी खासी धूप, अच्छा खासा तापमान और ऐसे में ये दर्शक इस क्रिकेट मुकाबले का आनंद लेते हुए नाग अगली गेंद लेकर के इस बार सीधे बल्ले से वापस खेला था बॉलर की दिशा में। एक अवसर जरूर था पर तेज स्ट्रोक गया था और ऐसे में नाग से वो गेंद पकड़ी नहीं गई और ऐसे में एक कहना चाहिए जीवनदान मिलता हुआ सरशील अब्बास को और उनके साथ इरफान लारा। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने आपस में मंत्रणा की क्योंकि एक प्रेशर की स्थिति है, दबाव की स्थिति है, बड़ा मुकाबला है और इतनी ज्यादा मात्रा में दर्शक है और इतने बड़े क्राउड के सामने जब आप खेल रहे हैं तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर अवश्य तौर पर देखने को मिलेगा। नाग इस ओवर में अगली बार ये गेंद और इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, काट किया था खूबसूरती के साथ, गैप में गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका, पहला चौका, रन संख्या पहुंच गई है 7 में दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के मुराद 7th स्ट्रेट। Beautiful shot of the bat of Sarshil Abbas. Time of that went to perfection. We have famous entertainer from Delhi here, Mr. Jan Saab. In the meantime, there is Nag again. Crowd is still flowing in good numbers to witness the grand finale. And look at that one, little uppish, beats the man at mid-on, gets 4 for that. And that was brought to you by Just Bukhara. Look at that one, little fuller on that occasion. His eyes lit up. And he says, thank you very much. Goes hard at it and beats the man at mid-on. No need to run for those 4 of them. Good shot in the end, and with that 4, they are into the double figures. As far as Muraad is concerned, the captain won the toss and without any hesitation decided to bat first. It's 12 for none after the completion of 2 overs. First over we saw just 2 coming, and this over we saw 10 coming, 2 singles and 2 boundaries. 2 on the trot, back-to-back 4s for Sarshil Abbas. Just Bukhara 4, 10 the over number 2, 2 done. It's 12 for none. 12 रन बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति में। तीसरा ओवर आसिफ रसूल का दूसरा ओवर बाएं हाथ के इरफान के लिए और इस बार इरफान ने बड़ा स्लो खेलने का प्रयास किया था, पूरी तरह से बीट के ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ सरकती हुई ये गेंद और सीधे विकेट कीपर वाहिद तेली के दस्ताने में। आकिब मीर टीम का हिस्सा है, रूप बशी टीम का हिस्सा, उमैस सेतु, जागीर लोन और आपके पास बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं। आदिल हुसैन भी है, आसिफ रसूल है, तो कहीं ना कहीं अगर जिक्र किया जाए आमिर अजीज टीम का हिस्सा है। बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेकर के उतरी है यहाँ रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम। इस बार अच्छी गेंद थी, बैक पर आकर के तिरछे बल्ले के साथ खेला जरूर कवर्स पे, गेंद को फील्ड कर दिया गया, रन बनने की संभावना थी नहीं। 12
तीसरा ओवर पारी का जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल लाइव प्रसारण आप तक। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम से फाइनल मुकाबला। मुराद 7 स्ट्रीट की टीम इस समय बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर के, और इस बार फिर अच्छी गेंद थी। गति का ज्यादा प्रयोग नहीं कर रहे हैं आसिफ रसूल। जानते हैं चतुर गेंदबाज हैं, अनुभवी खिलाड़ी है, और इन परिस्थिति में किस प्रकार से आपको गेंदबाजी करनी है, किस मानसिकता के साथ आपको गेंदबाजी करनी है, ये आसिफ रसूल बेहतर जानते हैं। और इन परिस्थितियों में एक दबाव बनाने का प्रयास, लगातार अंकुश लगाने का प्रयास रन गति में, और कहीं न कहीं वो एक दबाव जरूर रहेगा यहाँ बल्लेबाज इरफान लारा पे। 12 रन बगैर नुकसान के। अगली गेंद इस बार इरफान ने खेला जरूर था, पर उस प्रकार से इस गेंद बल्ले पे आई नहीं। वही पास में ऑफ साइड में लौट के रन बनने की संभावना थी नहीं, और एक बार फिर लगातार रन गति पे अंकुश, और कहीं ना कहीं ये अंकुश एक दबाव की स्थिति पैदा करेगी मुराद 7 स्ट्रीट के इन ओपनिंग बल्लेबाजों पे। Asif is trying to keep things tight. He's bowling really well. His first over, just 2 of that. He's in his second over, all over number 3. We are in Asif Rasool. He's got a lot of experience. Guided, delicate, and delicious to me. It should beat the man. It does. That's 4. It deserved a boundary. Just Bukhara for cover nicely. Quality shot again. Not trying to hit hard. Goes deep in crease, then guided it to perfection. Good shot again, nicely done, and that brings another just Bukhara 4. With that 4 there is addition in score. It's 16 for none. There was nothing wrong with the ball. It was just the class of batter as he guided it nicely. It ran away, sped past up the turf for 4. Bright sunshine, hot and humid conditions. Little uppish, he's taken in the slips. It's wicket number 1 down. Asif strikes, he draws the blood, and Irfan Mir is caught in the slip cordon. It's wicket number 1 down. Rishi the man with cool head on his shoulders. As easy as you get. Wicket number 1 down. And that brings captain in at number 3. At the time of toss, he threw it out without any hesitation. We want to put runs on the board. And he walked in at number 3. Now huge responsibility on his shoulders. How he's going to bat now? We'll have to wait and watch. And talking of today's final, it's full of excitement. What a game of cricket underway here at the centre of Pulwama Sports Stadium. There is a kind of a drama from public there, visitors, people loving the conditions here. But it is sometimes unbearable heat out here and hot out here at the centre. And that just brings some life to the contest. In the meantime, it is 16 for the loss of 1 as Muraad dented early with that important wicket of Irfan Lara. Lara is unable to take the ball. Hassan, he's caught in the slip cordon. Easy catch in the end. Soft dismissal as he's sent packing on his way back to pavilion. Crowd in when he falls. This huge crowd is in. But burning crackers isn't a good thing, Nazir. Just using that combustible material and consuming their money for nothing. This isn't good from my side, in my point of view. 16 without for the loss of 1. There is Jan Saab busy right now taking care of everything on the field. It's a bright sunshine, lush green outfield. Few of the barren patches on the either side of the centre here at Pulwama. Knocked to operate after the completion of over number 3. It is 16 for 1. It is a steady start. Not a quick one, not a quick one. It is a slow start, steady start. I think the two batters were trying to battle it out within the power play. Would have loved to take ball Hassan with the passage of time, but we saw the back of Irfan Lara. That was the beauty of Asif Rasool, who found an edge on that occasion. Here is Nag for the first time in his fresh ever. Good delivery, full of 1. Moving outwards, shaping for that drive. Lures him into that drive. Doesn't connect. Unable to connect that one. Connect is thin air. It is a dot delivery to start with. Nice way to start the fresh over. Right on money. And looking for that outswing is known as. He is known for those outswinger deliveries. And he produced 1 on that occasion to start the fresh over. The next one, good delivery again. Better line again. And this time he guided it. Deliberate and delicate. Is going to get 4 for that. That was brought to you by Just Bukhara. Rising tall on that occasion. Nothing wrong with the ball. Just the class of batter. With the soft hand. Is dropping his wrist. Gets 4 on that. And that was brought to you by Just Bukhara. It's 20 for the loss of 1. As we are in over number 4.
Crowd in good numbers. Excitement, joy and jubilation. And talking of spirits sky high today. This time round, works it away onto the onside, behind square on the on. There is a possibility of a single, one more run taken. It's 21 for the loss of one. 21 रन बन चुके हैं अब तक और ये चौथे ओवर की इस समय गेंदबाजी होती हुई इश्तियाक रसूल दूसरा ओवर, आसिफ रसूल ने 2 ओवर की गेंदबाजी, एक सफलता मिल चुकी है। इरफान मीर लारा के नाम से लोकप्रिय खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। सरशील के साथ आज उन्होंने पारी प्रारंभ की थी और नंबर 3 पे इम्तियाज लेफ्टी और काफी कुछ निर्भर करेगा इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा है इम्तियाज लेफ्टी का, पर आज इस मुकाबले में एक बेहतर पारी खेलनी होगी, एक चुनौती देनी होगी विपक्ष को यानी कि रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार की टीम को, जहां नासिर कुमार, आदिल रेशी, जहांगीर लोन, इश्तियाक रसूल, आसिफ रसूल, वाहिद तेली, उवैस सिद्धू, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज इस बार हवा में गेंद उस ओर खिलाड़ी थे, पहुंचने का प्रयास किया, बहुत सफल रहा और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका और बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर ये चौका मिलता हुआ और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई ये रन संख्या पहुंच गई है 25 पे। 25 एक विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर काफी तेज तापमान और ऐसे में अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध आनंद ले रहे हैं इस मुकाबले का। और ऐसे में हमारे दोस्त, हमारे व्यूअर्स भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा हैं। स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये लाइव प्रसारण पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम से आप तक पहुंच रहा है। फाइनल मुकाबले की पहली पारी मुराद सेवन स्ट्रीट की टीम बल्लेबाजी कर रही है। नाग सामने गेंदबाजी में इम्तियाज लेफ्टी ने सम्मानजनक रूप से ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को स्टंप्स कवर किए और उसके बाद मिडल ऑफ द बैट से वापस खेला बड़े रक्षात्मक रूप से नाग की और बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि एक विकेट मिल चुका है और ऑफ साइड में एक शानदार और बेहतरीन आक्रमण लगा के रखा है। जहां तक फील्डिंग का सवाल है, एक स्लिप के सहारे गेंदबाजी कर रहे हैं इश्तियाक रसूल। हालांकि वहां पर 22 नंबर की जर्सी पहने वो खिलाड़ी खड़े, उस बार ऑफ स्टंप से बाहर अतिरिक्त तो चाल तो सब बाहर लेकर के आने की कोशिश, वहां पर गेंदबाज की सफलता मिली और गेंद सीधे चकाती हुई बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी को विकेट कीपर वाहिद तेली के दस्ताने में। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। ये चौथा ओवर पारी का इतनी ज्यादा मात्रा में आज दर्शक जो है क्रिकेट के प्रशंसक, क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने यहाँ पर उपलब्ध हैं और क्रिकेट के प्रति उत्साह और जुनून सर चढ़ के बोलता हुआ। हाल फिलहाल के वर्षों की अगर हम बात करें तो क्रिकेट का क्रेज, क्रिकेट का जुनून जो है वो कश्मीर में सर चढ़ के बोलता हुआ और उसका एक परिचय यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में आपको देखने को मिल रहा है। चौथे ओवर की गेंदबाजी हो रही है। अब तक अगर हम जिक्र करें तो 4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। मुराद सेवन स्ट्रीट ने 1 विकेट जरूर इरफान लारा के रूप में गंवाया है। सरशील और उनके साथ इम्तियाज लेफ्टी नाबाद हैं। 25 पे 4 ओवर की गेंदबाजी के बाद आसिफ रसूल 2 ओवर 5 रन और 1 विकेट कमाल की गेंदबाजी, अनुशासित, पैनापन, वो किफायतीपन उनकी गेंदबाजी में दिखा है। एक बार फिर इस फाइनल मुकाबले में वो प्रस्ताव रखते हुए सामने बल्लेबाजों के सरशील के लिए गेंद लेग स्टंप की शक्ल हल्के हाथों के साथ को गाइड किया। पीछे खिलाड़ी हैं रूप बशीर आकर के गेंद को फील्ड किए पर दोनों बल्लेबाजों ने तोड़ करके रन पूरा कर लिया, छोड़ बदल लिए। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 25 से जाकर के 26, 1 विकेट के नुकसान पे 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Sarshil is look good. Positive approach. He's trying to tuck it around the corner. He's trying to place it and trying to scamper through. This is good cricket. This is smart cricket from Sarshil. As the job isn't done, job isn't cut out, long way to go. He's trying to lay the foundation for the big score, and he's got the skipper, the captain of side on the other side. He's going to face the likes of Asif Rasool with a lone slip in place. Defensive. Nicely done. Find a Saqib. The wall of cricket in Valley. He can't prevent that single. This is how cricket is going on. 1s and 2s. They're just trying to build that partnership. That's going to be crucial. Earlier on, they lost the wicket of Irfan Lara. That was a beauty of a delivery from Asif Rasool. Next one is deep increase. Find us Jack in place. Not for runs. Smart cricket, but look at the boys from Royal Kasbiyar. They're on their toes, keeping things tight, not leaking runs, trying to dry up singles. But in the meantime, Asif continues that one. Upish aerial down to the backward of scare. There is production will just be won. With that single, there is addition in score. Singles will help their side to release that pressure. But in the meantime, whenever you get a bad ball, you got to latch on. You got to break free because these boys won't let you break free at ease. So you got to bail themselves out. You have to fight it out, sweat it out.
as the game goes on. In the meantime, Asif, this time soft hand is wanted to escape and is denied once again. No run there. Asif in his third over 1 for 8. Look at his figures. Excellent. He's tightening the screw here. He's keeping batters under check, tightening the nose. It is a cagey moment for the two batters in the middle. The two batters are caged. They want that freedom. But Asif Rasool is in different mood today. Crowd in good numbers. I can't believe, unbelievable crowd here, extra bounce. And he works it away onto the onside, tucks it, picked up a single. And that's all he's going to get here. One more run added. With every passing ball, they need runs. And they need to scamper through, rotate strike. That's going to be key, Nazir. As far as Muraad is concerned, the captain won the toss and they decided to bat first. They need runs. They need to put on a good score. And during the toss time, he threw it out. When I asked him why he decided to bat first, he said it's a pressure game. We will try to put runs on the board and give a bowler something to bowl at. It is a pressure game. It won't be easy to hold on to the nerves. You need nerves of steel. But this game, as far as the Royals are concerned, they have that depth in the batting lineup. They have number 6 and number 7. We're going to assure them and ensure them that we are still alive in the competition. Still a long way to go. It's 29 for 1 as we are going to be in over number 6. 5 done. 3 sent in by Asif Rasool. He's gone for just 9 of his 3 overs and picked up 1. And now the other side now conceded 20 of his 2. No change in the bowling. Captain is happy to carry on and continue with his pace deal. Look at that one. There was space on it. A step, bit leg side, trying to open up offside. He's beaten with that extra bounce. And there was space behind that one that beats the batter who was eyeing and trying to go through offside. There is a heavily cordoned offside. It's a packed offside. It won't be easy to find that gap on the offside. Oh, look at that one! What a ball! It's ball of the match. You call it Banana Co. And I call it Chris and Co. is undone with a beauty. What a delivery. And that ball wicket brought to you by Just Bukora. Excellent ball. And ball of the tournament to me. Excellent peach of a ball. And it's completely undone. You call it castled. I call it completely bamboozled. निश्चित तौर पे सभी शब्दों का आपने प्रयोग कर ही दिया. खूबसूरत गेंद थी, पूरी तरह से चकमा दिया. और क्रिकेट की बात में कहें तो चारों खाने चित करते हुए साफ बोल्ड कर दिया. नाग को मिल गई पहली सफलता. और रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बिहार को दूसरी सफलता. दबाव शुरुआत से ही बड़ा मुकाबला और ऐसे में एक बहुत बड़ी विकेट मिलती हुई यहाँ दूसरा विकेट गंवाया है मुराद 7th स्ट्रीट की टीम ने मात्र 29 पे. Nazir, it's a big loss. It's a huge wicket, and you know that lefty, he's in red hot form. And his side needed him badly, and he failed. But that was unplayable one. It is the beauty of Nag. He draws the second blood, and Imtiaz left. You can see that the response and the reaction from the boy. He knows that what he has done, but that was unplayable. It castled him. It came back sharply. That we call the nip backer. Excellent ball. It was just like the Test match line. What we saw in that Test match final. That ICC Test Championship final, what was going on from South African bowlers, and equally Australians produced something special, but it was Africa in the end who lifted the title after 27 years. Forget about that, but I was just talking about what kind of a delivery Nog produced on that occasion. That was an absolute beauty. Snarter, what a ball, coming into the left-hander. He has no idea where he was, and it gone between that bat and the body, creating a kind of space. And through that channel, through that corridor, going on to hit the top of the off, and Baylor sent for the toss. And we saw the backup captain. It is a great moment for the bowling side, but it is a complete agony, and kind of autumn downward for batting side here at Sports Stadium Pulwama. They need someone who's gonna bat, who's gonna fight it out, and they need someone who will battle it out and step up to the occasion. Someone need to come out, all guns blazing. The second thing is that other one need to play that second fiddle, and the two batters, they need to put their heads down. Just try to understand, and you need a punishment. Try to build that. You need resurrection, construct that innings, and someone need
to produce something special so that their boat is afloat. 29 रन 2 विकेट के नुकसान पे 5.2 खूबसूरत गेंदबाजी इश्तियाक रसूल द्वारा और विकेट मिला इम्तियाज लेफ्टी का। नए बल्लेबाज दर्दिश गोनी अब सरशील अब्बास के साथ। हालांकि सरशील ने 15 रन अभी तक बनाए 13 गेंदों से। अच्छी शुरुआत यहां पर गेंदबाजों द्वारा, जहां तक आसिफ रसूल और उनके साथी खिलाड़ी इश्तियाक रसूल का सवाल है। 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए, दर्दिश और उनके साथ सरशील अब्बास ने। और जैसा कि आपने जिक्र किया, यहाँ से एक पार्टनरशिप की आवश्यकता, एक साझेदारी की आवश्यकता है। संयम, आत्मविश्वास, एक पॉजिटिव एग्रेसिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करनी है, एक बेहतर साझेदारी निभानी है, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना है और बेहतर तरीके से इस पारी को चलाना है, तब जाकर के आप एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हालांकि बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प आपके पास हैं और उन विकल्पों का आपको इस्तेमाल करना होगा सही समय पे, सही दिशा और निर्देश के साथ। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, एक और बेहतर गेंद, खूबसूरत लाइन और लेंथ के साथ, सही दिशा और लंबाई के साथ, नियंत्रण पूरी तरह से गेंदबाजी में इश्तियाक रसूल द्वारा। 29 के बाद 2 रन और आए खाते में, तो 31 पे 2 ये पावर प्ले का जो पहला पावर प्ले अनवारित शेवर का रहता है उसके आखिरी ओवर की गेंदबाजी होती हुई। और अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी आसिफ रसूल ने की है। इश्तियाक रसूल ने तीसरा ओवर वर्तमान में फेंक रहे हैं। 2.3 ओवर में उन्होंने अभी तक 18 रन दिए हैं और 1 विकेट उन्हें भी मिला है। ऐसे में अगली गेंद देकर के एक स्लिप के सहारे, और इस बार खूबसूरत, बहुत बढ़िया हवाई यात्रा पे गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। कमाल का स्ट्रोक दर्दिश गोनी के बल्ले से निकलता हुआ और आत्मविश्वास लौटेगा इस बल्लेबाज का इस स्ट्रोक के साथ ही। रन संख्या पहुंच गई है 37 पे 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा पूरी तरह से दर्शकों के शोर से गूंजता हुआ और माइक्रोफोन के जरिए आप तक ये आवाजें, ये शोर पहुंच रहा है। इस शोर क्रिकेट के इस महासंग्राम का, जहां पहली पारी इस फाइनल मुकाबले के वर्तमान में चलते हुए। Is it gonna boost his confidence? Only the time will tell us. Like again, this time he's beaten on that occasion and there is celebration. And he's given out, caught behind, wicket number 3. I was just talking about, is he gonna gain some confidence? There is inside edge and wicketkeeper Waitele. He holds on to the ball. It's wicket number 3 down. 1 brings 2. That follow wicket brought to you by Just Bukhara. Dardish Kone is back. He's going back to pavilion. He trudges back to hut. Nag strikes again. He strikes gold this time round. He gets the big man. The man, we call him season campana. He saved his side. Plenty of time is this season, but none this time round. As he's gone, he's on his way. Waitele the boy, behind sticks and stumps, does well. Does very well to hold on. So wicket number 3 down. They are 37 for the loss of 3. That's 6. But well, I thought it will help him to carry on with the same pace. But all of a sudden, he got overcautious. But full credit, full marks to the bowler. He trapped him yet again and once again. And this is Nag for you. That's why he's known as South Kashmir sensation. He can bowl, he can bat, and he can field. He's a 3-dimensional player. And what a player. Fantastic. Mind-blowing character. It's going to be Asif Rasool again to carry on from that far end. Crowd in good numbers. Huge crowd is in. And as you throw it out, it's going to beat today the record. Once we saw in that Shala Bulgaria. The other one we saw in WCL. But I can't believe that. And I don't think that it's going to beat the WCL today. It will take it a lot of things to do to beat that crowd of WCL, but no doubt about it. We have crowd in huge numbers, no doubt about that. But it will take little more doing from the locals here. The buzzing streets of Pulwama, they need to throng into the center to be the part of this final, to beat that crowd what we saw in WCL few weeks back. And we have Mansoor Aziz here, and please join the interim chairman. It's over to you. You want to come in and share some fruitful words with the beloved listeners? They were eagerly waiting for you. Please come in. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इस वक्त हमारे 2 कमेंटेटर आपके खिदमत में हाजिर है। हालांकि एक बड़ा फाइनल मुकाबला जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और आज मैं एक कैमरामैन की हैसियत से यहाँ इस आपके डगआउट में बैठा हूँ, तो आप एक एज कमेंटेटर इस वक्त काम कर रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. It was just like the sparrow thought, and he says, thank you very much. I'm just a commentator today, cameraman today. In the meantime, Newman walks in to face the likes of Asif Rasool. He's got a lot of experience. What a cricketer. Incredible.
immensely talented. It's 3 for 37. Muraad batting first in a must-win clash like finals. Season 3 and final is underway. One final time, one final punch. Who is going to celebrate tonight? Find it out. Stay tuned and stay connected to JK Sports Time. Crowd still coming in good numbers. Look at that one. A little uppish, driven straight down to the long off area. There is a possibility of a single. This is what they need at the moment, at this very crucial juncture. Rotation of strike is key. And it's Assalamu Alaikum from our side. Someone is watching us. Nazir, you may throw it out. You know him better than me. आदिल भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मकहामा से। और ऐसे में अगर देखा जाए तो 37 पे 3 और अगर आसिफ रसूल की बात करें मात्र चौथा ओवर, यानी कि पारी का कुल मिलाकर ये 7 ओवर है, उनके कोटे का आखिरी ओवर है, वो मात्र 10 रन खर्चे 1 विकेट प्राप्त किया। तो अनुशासन देखिए, किफायतीपन देखिए उनका, बहुत ही बेहतर गेंदबाजी, नपीतुली अनुशासित, साधारण लाइन और लेंथ। और सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण करके रखा है इस बल्लेबाजी के क्रम की। अगर हम बात करें मुराद 7th स्ट्रीट की, 37 3 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर। एक और गेंद, हालांकि ये लेग स्टंप से बाहर, वाइड करार दी जाएगी। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 7वें ओवर की गेंदबाजी। मुराद 7th स्ट्रीट की टीम पूरी तरह से दबाव है, क्योंकि एक पार्टनरशिप की आवश्यकता। शुरुआत में एक के बाद एक बल्लेबाज जो है आउट होते हुए वापस मैदान से बाहर चले गए, तो दबाव बना। और इस बार एक और कैच लीजिए, किनारा छूती हुई गेंद सीधे वहां पर स्लिप में खिलाड़ी के पास, कोई गलती नहीं की। और चौथा विकेट जाहिर डार के रूप में मुराद 7th स्ट्रीट ने गंवा दिया है। दबाव में साफ नजर आती हुई टीम। Murad the 4 down. Oh, look at Royal Caspiar and their fielders, their team, their pack going after Zaidar, trying to tease and annoy him, but he's gone here. He's unsettled. It's wicket number 4 down in a spot of bother. Is it just the beginning and the 4 down? What's going on? It's just like that. You call it tu chal mein aaya. They're following a kind of pattern here. You go, I'm just coming after you. And who's going to keep the boat afloat? The boat is about to capsize. I often use these words. You heard myself plenty of times using these words. Someone need to come in and take that ship to the shores, to the embankment, as they are a 4 down. In a real trouble here, in tatters, as Zaidar is gone. The big fish, big lad, departs as they're 4 down. We'll have to wait and watch who's going to come in at number 6. But at the moment, tail is literally up as far as Royal Caspiar are concerned. They're enjoying their royal rights since 2024. They won all the finals, all the big games in 2024. They are unbeaten, enjoying the game. And this season they lost only one solitary game that gone against their side. The result gone against their side. Overall, they're the favorites everywhere. And once again here, look at this side. It will be early to say that they're going to win away and they're going to walk away with that trophy and the silverware and those dollars, because this is the game of glorious uncertainties. You can't write any side up. But at the moment, it looks like as they're holding the upper hand, they're in ascendancy. On the other side, batters not in a captive mood, but they're losing patience with every passing ball. They're 4 down now in a spot of bother, in tatters, in shallow waters. It is completely beating us. Yeah, no doubt about that. It's beating. And someone used it to throw it out and pen down these words, beat the heat. How could and how come we're going to beat the heat? We're doing our level best, but it's the heat beating we people. Only one thing that can We are on the receiving end. That is this. This is the only thing that can beat them. Well, I can understand that. Funny discussion going on and funny words. A comment from Sheikh Nazir. He passed it on few comments. Thank you very much, and I hope and I believe, inshallah, by the grace of Allah. In the meantime, Newman walks in. It is Salim Mir, promoted up the order, comes in at number 6. He's a tail ender, but he can also bat. He can up the sleeve and use that long handle when required. Asif Rasul to continue and carry on. And he is in red hot form. He's hitting the purple patch. The way he's bowling, it is just like the poetry in motion, isn't it? It's just like the poetry in motion. He's using all those poetic techniques, or that we call the figurative speech. The way he's bowling is making the ball do the talk. It's the ball which is doing wonders at the moment for Royal Caspiar. Good delivery again, scared him. Excellent ball from Asif Rasul. What a spell. 4 overs, and he picked up 2 wickets and considers 11. Excellent.
Your words, I call it icing on the cake. Brilliant, adorable, add-on, excellent, and excellence from Asif Rasool. 4 overs, 2 for 11. लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हजूम, मिल जाए एक वफादार शख्स तो बहुत है. Well, it's the one-man army. Absolutely right. You nailed it to perfection, believe me. From my side, I'm going to use these words. You nailed it to perfection. The way he bowled, he broke on the back of Muraad. Here, firecrackers are going on. This isn't a good thing. You're going to get nothing. The outcome is simply those ashes and dashes. You won't get anything out of it. So don't consume your money like this. You know that commercialization and money matters at the end of the day. That Gandhi planted on a paper currency here in India, it matters the most at the end of the day. मुनव्वर, मानसिकता और विचारधारा पे हमारी सरकार सत्ता में रहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाई है, तो यहाँ इस पे नियंत्रण करना आसान नहीं है. पर चलिए 39 4 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ दबाव में मुराद 7 स्ट्रीट की टीम. हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता, पर यहाँ एक पार्टनरशिप की आवश्यकता या एक साझेदारी की आवश्यकता, उस साझेदारी को निभाना होगा इन दो बल्लेबाजों को. सलीम मीर नए बल्लेबाज हैं जिन्हें खाता खोलना बाकी है. 2 गेंदें उन्होंने खेली और उनके साथ सरशील 16 पे हैं. नए ओवर की शुरुआत नाग का ये आखिरी ओवर अपने कोटे का. इस बार अच्छी गेंद थी. सरशील एक बेहतरीन बल्लेबाज है, पर यहाँ दबाव उन पे भी होगा. पर इस दबाव में वो अपने आप को किस प्रकार से स्थापित कर पाएंगे, किस प्रकार की पारी खेल पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात रहने वाली है. सरशील अब्बास और उनकी टीम मुराद 7 स्ट्रीट के लिए 39 पे 4 7.1 ओवर की गेंदबाजी. नाग इस बार हवा में उछली है गेंद. उस ओवर खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब तक वे पहुंचते आदिल ऋषि ने प्रयास किया और उसके साथ बैकअप पे नासिर कुमार ने गेंद को फील्ड कर लिया, पर कुछ रन जरूर मिले और ऐसे में रन संख्या में वृद्धि होती रही, तो रन संख्या पहुंच चुकी है अब 40 पे 4 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर. सबसे बड़ी चीज कि 2 जो आपके प्रमुख हथियार हैं गेंदबाज हैं, उनसे गेंदबाजी करवाई और बहुत ही बेहतर गेंदबाजी, नियंत्रण दिखाया है, विकेट प्राप्त किए हैं. तो इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है रॉयल क्रिकेट क्लब कसब्यार की गेंदबाजी की ओर से. 40 पे 4 8वां ओवर नाग का आखिरी ओवर है. आसिफ रसूल 4 ओवर समाप्त कर चुके हैं. स्ट्रोक बेहतर है, पीछे खिलाड़ी है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था रन बटोरने का. 2 रन और समझते खाते में जोड़ते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई यह 8वें ओवर की गेंदबाजी वर्तमान में चलते हुए. और अब तक अगर बात करें 8वें ओवर में 4 विकेट जरूर गंवाए हैं मुराद 7 स्ट्रीट की टीम ने. 7.3 43 4 विकेट के नुकसान पे 3.3 ओवर 30 रन और 2 विकेट और 2 आसिफ रसूल को 4 ओवर में 11 रन देकर के कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और यहां से अब परिवर्तन देखने को अवश्य मिलेगा. इस बार अच्छी गेंद थी पर स्ट्रोक बेहतर था. हालांकि लोगों के खिलाड़ी आकर के जब तक गेंद को फील्ड करते बड़े आत्मविश्वास के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोड़ बदल लिए. एक सिंगल और खाते में 44 4 विकेट के नुकसान पे 7.4. जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और उसके अलावा जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये लाइव प्रसारण पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम से आप तक पहुंच रहा है, जहां रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला मुराद 7 स्ट्रीट की टीम से बल्लेबाजी करती है रॉयल क्रिकेट क्लब कसब्यार के बाद. नाग अपने कोटे के आखिरी ओवर में 8वां ओवर. एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद के बड़ा स्ट्रोक ऑफर किया था, पढ़ने के बाद बाहर की तरफ हल्का सा कोण बदला और गेंद सीधे हाथ में आई विकेट कीपर वाहिद तेली के दस्ताने में. पूरी तरह से यहां पर बीट किया बल्लेबाज सरशील अब्बास को, जो कि इस समय 20 पे नाबाद है. 19 के देखे लिए सलीम मीर को खाता खोलना है. 44 4 विकेट के नुकसान पे 7.4 ओवर की गेंदबाजी. एक स्लिप जहां पे आदिल ऋषि तैनात है. नाग अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार रेक्लाइन के सारे हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में खेला, हालांकि एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को. 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच गई है 45 पे और यह ओवर भी समाप्त हुआ. तो 8 ओवर की समाप्ति 45 4 विकेट के नुकसान पे मुराद 7 स्ट्रीट की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती है इस फाइनल मुकाबले में. Pulwama Stadium painted with different colors. It's a kind of a spectrum. We have those beautiful flags waving. Gentle breeze, Saklan is here. And in the meantime, it is 45 for the loss of 4 after the completion of 8 overs. 8 straight overs from pace. It was Nag and Asif Rasool who consumed, who shared 4 overs each, we can say. One ball 4 overs, the other one ball 4 overs on the trot. And it is 45 for the loss of 4. Zui, please stay away, little bit away. I can bend your knees for a while. In the meantime, over number 9 is about to start. Muraad needs someone who's going to bat through the innings.
They need someone who will battle it out and fight it out against the likes of Royal Kasbia. They lost 2 against the same combination, and once in Jabalpur and once in North Kashmir's MKT. And thanks to that was the man, Tarek Abdullah to be precise. I was about to throw out that wonderful person. We used to awaken the people, but coming back to the game again, it's 45 for the loss of 4. The impact of heat. No doubt about that. It is the heating effect of sunlight here. Crowd in manifold. This huge crowd is here. And look how much time our people have for these things. And they're here. They have plenty of time to spare around the center, beyond those boundary cushions. Driven straight. There is a man. Will just be one. And they need to rotate each and every ball. 1s and 2s should come. And the batters need to keep going, keep pushing, and look for 1s and 2s. Need a partnership, stability. Someone need to stabilize. In the meantime, Amir Aziz, for the first time, spin into the attack. Is he going to weave that fab? Upish, aerial, back past the ball. Some sort of relief for the sigh of relief. That was brought to you by Just Bukhara. Safe zone to target. Over the baller's head. Crackers are still going on. The crowd looks disciplined here. It looks decent today. Oh, he's lucky to survive scare. Nearly gets him. Ball goes beneath the bat. I was about to use that ooze through, but it goes up that inside edge. It ricocheted onto the onside. And Mansoor Aziz, he's having some fun. It's 50 up for Muraad Cricket Club. They lost 4 top quality batters. The top order is rattled. The back is broken. The side is wounded. Someone need to step up. Flicked away. There is a man. There is Phil Umese, the safest man on the field. He's got that safe pair of hands to take care of the side on the field. He does well. Does mop up within the time, but can't prevent that single. 1 more run taken. It's 52 for the loss of 4. Partnership is what they require, and captain is going for kill here straight away. 8 overs from pace, and now it's time for the spinners to come in and weave that magic. Use that golden arm, the magical wand, to deal the batters and contain them. With a slip in place, Rishi is there. Shipping for that solid defensive shot is beaten. It's a dot delivery. पहली बार स्पिन आक्रमण का प्रयोग किया गया है इस मुकाबले में। जहां तक रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बिहार का सवाल है, 50 रन बन चुके हैं 4 विकेट पे। 9वें ओवर की गेंदबाजी और आमिर अजीज का इस्तेमाल किया गया। काफ़ी ज़्यादा तापमान और ऐसे में इस तापमान के चलते यहां इस मैच का मजा लेने के काफ़ी ज़्यादा तादाद में दर्शक पहुंचे हैं। एक और खूबसूरत ऑन ड्रिवन लॉन्ग ऑन की ओर एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी रणनीति पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है। सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर, रोटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। न सिर्फ महत्वपूर्ण बल्कि इस रोटेशन के साथ ही आप अपने आप को दबाव से दूर रख पाएंगे, विपक्ष पे दबाव बना पाएंगे। ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। ऐसे में जिक्र करें 9 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बिहार की ओर से। मुराद स्ट्रीट ने 9 ओवर में 53 बनाए हैं, 4 विकेट खोए हैं। आमिर अजीज के पहले ओवर से 8 रन आए। नाग ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 32 रन खर्चे, 2 विकेट मिले। आसिफ रसूल ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 11 रन देकर के 2 विकेट किए प्राप्त किए। तो बहुत ही बेहतर नपितुली अनुशासित गेंदबाजी, 3 गेंदबाजों का चयन। और अब एक बार फिर एक और परिवर्तन, दोहरा परिवर्तन। आकिब मीर का इस्तेमाल अब गेंदबाजी में। ये पारी का 10वां ओवर, आधी पारी समाप्त होने जा रही है। जहां तक इस पहली पारी का सवाल है बल्लेबाजी में, और देखा जाए तो काफी मुश्किल की चुनौती जरूर है। स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। और इस बार आके मीर के विरुद्ध कड़ा प्रहार, लोगों के ऊपर सीधे स्टैंड्स में जस्ट बुखारा छक्का। आके मीर का किया स्वागत। बल्लेबाज ने 53 से बढ़कर 59 4 विकेट के नुकसान पे 9.1 ओवर की गेंदबाजी। पटाखों की आवाजें गूंजते हुए हर दर्शक को उत्साहवर्धित, हर्षोल्लास का वातावरण इस फाइनल मुकाबले में। अगली गेंद देकर के आके मीर इस बार सम्मान दिया, हल्के हाथों के साथ खेला जरूर ऑफ साइड में, वही पास में कवर्स में दौड़ पड़े रन के लिए। 1 रन और अच्छी रणनीति। पिछली गेंद पर छक्का, इस गेंद पर सिंगल। रन संख्या पहुंच चुकी है 60। 10वें ओवर में मुराद 7th स्ट्रीट
4 विकेट के नुकसान पे इम्तियाज लेफ्टी जाहिद डार। और उसके अलावा अगर बात करें तो इरफान लारा आउट होकर मैदान, दर्दिश गोनी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं खूबसूरती के साथ, कलाइयों के दम पर मोड़ा। हालांकि एक सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाज अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 61 पे 4, 9.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये 10वां ओवर और 61 रन। और ये पार्टनरशिप धीरे धीरे से पनपती है और इस साझेदारी को यहां से अगले 4-5 ओवर और बढ़ाना होगा और डीप ले जाना होगा, तो फिर एक सम्मानजनक लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। एक और अच्छी गेंद आके मीर के सम्मान दिया वापस बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के सलीम मीर और उनके साथ सरशीर। और सरशीर पारी का प्रारंभ करने आए थे इरफान लारा के साथ, लेकिन अभी तक वो नाबाद हैं। अभिजीत है एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं दबाव में, क्योंकि जानते हैं यहाँ उनका विकेट काफी महत्वपूर्ण है, उनके विकेट का महत्व बहुत ज्यादा है, दायित्व उनके कंधों पर, उस दायित्व को निभाना होगा। इस फाइनल मुकाबले में उनके बल्ले से कुछ रन उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनकी टीम चाह रही होगी और वो कोशिश करते हुए, क्योंकि एक बेहतरीन बल्लेबाज है तो जानते हैं इन परिस्थितियों में किस प्रकार से आपको बल्लेबाजी करनी है। एक बेहतर और शानदार क्रिकेट का मुकाबला, यहाँ खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बौखारा चौका। और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में लगातार वृद्धि होती हुई ये रन संख्या 10वें ओवर में मुराद 7 स्ट्रीट की पहुंच चुकी है 66 पे 4 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर समाप्त, 66 बने 4 विकेट खोए। सलीम मीर 8 पे नाबाद है 8 गेंदों से और सरशील ने बनाए हैं 35-28 गेंदों से। Interesting. 2 overs from spin yielded 21, 13 from this over, 8 from the other over. And two facers were keeping things tight as they capped batters under check, but the 2 overs from spin, over number 9 and 10 yielded 21, and 2 expense overs, 9th yielded 8, 10th yielded 13. And the boy is here. He is selling those rubber whistles, and to earn the bread, hard fought bread. He's doing good job. May Allah bless him and keep going. And this is what we need to do. Life teaches us a lesson, and every day is a new day. Start afresh. And this is a special thing is brought on, and this is called the rubber whistle. And this is a special thing, you call it in Kashmiri pompo. It is just like that we call it. And first of its kind, it was used in South Africa during the FIFA World Cup 2010, and well witnessed these rubber whistles. And over the past couple of years, these are being used here in this part of the world. Well, this isn't good from Mansoor, as he is trying to target myself in the comment box. Well, I can't understand. I fail to understand what he is trying to prove here. What's going on in Mansoor? It is just like that. He's kidding. He's toying with his toy here. It's not just a rubber whistle. It's a kind of a toy. It's a type of horn, and he tells It is a type of horn. How can you bell this horn at that time? Well, you were talking about how you're going to ring it and how you're going to pace it up. Well, later on we shall come to that, but at the moment it's 10 done. Nazir, 2 overs from spin, and things looking easy. Things are looking now rosy for the 2 batters in the middle. First 8 overs from pace. It was a top situation. It was a tight situation for the 2 batters, and we saw that 4 of them were packaged out and sent on their way back to pavilion. But the 2 batters, Salim Mir, and he's got his counterpart who got his eyes in, who walked in at number 1, that was Sarshil Abbas. He's now not just getting confidence, he's taking bowlers on. 8 overs from pace, they were on top. They were just riding on the batters. 2 from spin, and it released that pressure. The momentum is now shifting. The pendulum is to some extent shifting other way, and that's what cricket is all about. This is the game of glorious uncertainties, and we have seen first 8 overs of pace, and they were just going off to the batters. The next 2 overs, just 20, and the next 2 overs, 21 coming, plenty of remaining 2 overs. Irfan Sarkar is here. Well, Sarkar, I won't agree with your statement. It takes some doing here, brother. It isn't easy. It takes conviction and determination. But it's up to you, boy. You have done a really great job. But what we saw early in the morning here, it was all about that Kashmiri spice and flavor when it comes to those voices. And what we heard in the morning, that was the folklore of Kashmir. The music we're known for in the valley. And we heard that early in the morning prior to the game pre-match show. We saw a lot of things going on early in the morning and gone by. Now it's time prediction again. Play is about to resume. It's game time again. 10 done, halfway mark.
And it's now shared to some extent. At one stage it was completely owned till over number 8, completely owned by Royal Kasbihar. The remaining 2 overs yielded 21. And now it looks like the game is in balance. It's hanging in balance for a while. Well, he's talking of that heat wave which is affecting we people. Well, people walking from one end to the other side. They're just doing that. Rotation is going on from one end to the other end. They are wandering from one place. No doubt about they're wandering. No doubt about that. Going from one end to the other end. Game time again. It's Amir Aziz to operate. Conceded 8 of his first over. Where he's going to keep this one here. The first ball of the fresh over. In the air! And just short of a man there in the follow through. What could have been wicket number 5. It dropped short of a bowler there. And he gets away with that when he rolled his bat early on the occasion. And off the splice, it low bit off. And dropping short of Amir Aziz. He tried to anticipate. Unable to make it to the ball. There is a flight and off. Deceived him on that occasion. Lures him into that drive. He's got the man at long off. He's got the man at extra cover. It was better to use that mid off. The way he flighted that one, giving loop and air to the ball, asking the batter go at it. Amir again, this time right on top of that one, deep in crease, planted his left foot outside the line, then trying to adjust himself, looking to pull it. But there was extra bounce that deceived the batter, unable to get in complete control of that one, a dot delivery. But this over Amir Aziz is trying to mix it up. We have seen that flight, we have seen that shortening the length. That's a good looking shot onto the offside. Soft hands. Picks up a single. It is 67 for the loss of 4 wickets. Over number 11 we are in. Amir in his second over. His first over conceded 8. In his second over he's gone for 1. Huge crowd. Buzzing streets of Pulwama today. And beyond the boundary cushion. Crowd in many folds. Typical defensive shot again. It is single again. And what he's gonna do on this one, is he gonna mingle this one with a big shot? Is he gonna carry on what he did in last 2 overs, what we saw in over number 9 and 10? Is he gonna repeat that? Repeat? And let's find it out. No slip in play, slip removed. As we watch Amir Aziz again. Oh, that was a good delivery again. There was space behind that one and coming into the batter, trying to cramp him for space, but somehow gets away with that one. A single 10 the over number 11 gone. They are 68 for the loss of 4. Good over this from Amir Aziz. Nice comeback. First over gone fade, but the second over yielded just 2, and that means he's considering at the rate of 5 over. The economy of 5. He improved, and that's what they need at this very crucial juncture. This is a nice comeback. And listening to the noise again, because John Saab is there. And they're enjoying, they're loving these moments there. And John Saab is a kind of a celebrity in the valley nowadays. Facebook and people love this lad. It's all about John Saab going on from one end to the other end. In the meantime, Aqib Mir shaping for that slog sweep is beaten again. There was little bounce and offer. He thought that it is a half tracker. He was eyeing to go over mid wicket, unable to get hold of that. Now this time shuffle across. That's aerial. Where is this one going? And Jangilon does well on the bounce. Stops the ball. What could have been a boundary and limits the scoring down to 1. Good field in the end. This is what you need. Unrelenting passion and love for the game. He stopped the ball. Mansoori may send it to that person in the meantime. Here is the next one. That's Hopish. That is aerial. It's going to drop in no man's space again. He is safe with that single. There is addition in score. It's 70 for the loss of 4. It was in the air. Doesn't bother to keep that one down. Going after that shot again. Checked it in the end. He's got 2 boundary riders. He's got long off. Nasir Kumar is there. He's got long on. Gone flat. That is a maximum. He maximizes the damage with a just book on a flat 6. This is what you need. Half tracker. And he gets that one in the zone. He parked that one in the parking lot beyond that boundary cushion, beyond that boundary rope, and all the way for a maximum. It is 77 for 4 as we are in over number 12. No respite for Aqib Mir. 13 off his first. And this over, he conceded a 6 and 2 singles.
He's going to compound his agony here as he's taken on again. That was a flat one as he flat bats that shot again. And John Saab is entertaining crowd on that portion. Now shaping for that sweep shot. I think needless from batter there. It was better to tap it or dab it through offside, scamper through. But he just tried to sweep it away. Okay, this time he comes forward, he's gone! It's wicket number 5 down. Gives himself charge. He's stumbled by Vaitele. Akimir gets his man. What a comeback. I sensed a comeback. And here is wicket number 5. They needed this partnership. Leave long, prolong, but no long. This is going to stay in the middle as he's sent packing. He's walking up the field. It's wicket number 5 down. Half their team down here against the likes of Royal Kasbiar and Kasbiar Town and that friendship. Is it that? You heard what I heard last time. Yeah, of course, you will be sober that. You're gonna sip in and it's over to you dear. Sheikh Nazir. थैंक यू मनवर भाई यार ऐसे में वो कुछ सवाल ज़रूर पूछे बल्लेबाज ने और अंततः हर सवाल का जवाब आकिब मीर ने यहाँ साफ बोल्ड करके वापस चलता किया एक बहुत बड़ी विकेट सरशील के रूप में. I was talking about that. Akib Mir is taken on, no doubt about that. He conceded 21 off his 2 overs, but he struck gold here because the only man who was trying to keep his side in the game, in the hunt, he's sent packing. There is a win-win situation for Akib Mir. और मनवर जब आप कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो दिन के अंत में आप आलोचनाएं में ज़रूर रहते हैं, पर जब आप अच्छा प्रदर्शन हालांकि वो इससे पूर्व था कुछ रन उनके विरुद्ध जरूर बटोरे अंततः बहुत बड़ी विकेट जो एक चिंतित ज़रूर थी रॉयल क्रिकेट क्लब के लिए उसको चलता क्या आकिब मीर ने. भले ही उन्होंने कुछ खर्चीले रन ज़रूर खर्चे हैं ओवर से 1.4 ओवर में 21 खर्चे हैं 77 4 विकेट के नुकसान पे और यहाँ 5वां विकेट मिलता हुआ सरशील ने 44 बनाए 27 गेंदों का सामना किया और मुराद सेवस्ट्रीट ने अपना 5वां विकेट. सरशील जो कि सेट बैटर थे उनको गंवा दिया है. नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में सलीम मीर के साथ वसीम राजा एक और बेहतरीन बल्लेबाज दिग्गज ऑलराउंडर. इस बार सलीम मीर के लिए अच्छी गेंद थी स्टंप्स पे खूबसूरती के साथ ऑफसाइड में उसको प्लेस किया. दौड़ पड़े रन के लिए थ्रू किया जरूर था पर सुरक्षित क्रीज पे पहुंच गए. 1 रन और खाते में 13वें ओवर की गेंदबाजी 78-78 5 विकेट के नुकसान पे. और लगातार बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन इस समय गेंदबाजों का. आसिफ रसूल को 2 विकेट इश्तियाक रसूल को 2 विकेट आकिब मीर को 1 विकेट. आमिर अजीज को सफलता नहीं मिली है और आमिर अजीज नया ओवर प्रारंभ कर चुके हैं. उनका 30वां ओवर है 2 ओवर में 11 रन खर्चे हैं. सफलता उन्हें मिली रही है और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है मुराद सेवस्ट्रीट के फाइनल मुकाबले में. और स्कोरबोर्ड पे मात्र 78 5 विकेट के नुकसान पे दर्शकों का शोर गूंजता हुआ और जॉन साहब एंटरटेन कर रहे हैं क्राउड को. हर सो इस समय जॉन साहब की आवाज़ सुनाई देते हुए इस बार स्टेप आउट करके बाहर निकले क्रीज को छोड़ करके गेंद की पिच तक पहुंचे. नाव की ओर खेला सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए पर एक सिंगल दोनों बल्लेबाजों को मिलता हुआ वसीम रजा ने खाता खोल दिया. एक और खाते में 79 पे 5 13वां ओवर आमिर अजीज गेंदबाजी कर रहे हैं. नासिर कुमार जो कि लॉन्ग ऑन पे नजर आ रहे हैं और एक बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी लॉन्ग ऑफ पे. जी हाँ अब दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इसमें उससे पूर्व वसीम रजा बाएं हाथ के बल्लेबाज थे. अगली गेंद लेकर के तैयार हो. एक और अच्छी गेंद एक और बेहतर गेंद यहाँ पे आउट करार दिया गया और एक और विकेट LBW करार दिए गए. और इस प्रकार से 79 पे 6वां विकेट. आधी से भी ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुके हैं और मुराद की टीम पूरी तरह से बिखरते हुए अस्त व्यस्त होती हुई इस गेंदबाजी के सामने. रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला. अरे अच्छा खासा तापमान और उस तापमान के बीच यहाँ गेंदबाजों का प्रहार. 79 पे 6 विकेट गंवा दिए हैं मुराद क्रिकेट क्लब ने इस फाइनल मुकाबले में. और क्या भारी मात्रा में जनसंख्या यहाँ उपलब्ध है. क्रिकेट के प्रशंसक क्रिकेट के चाहने वाले इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए और हमारे श्रोता जी के स्पोर्ट्स टाइम के ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर चैंपियन फीस एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बुखारा हमदान हुरिकेन्स डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब के अलावा HND थैंक यू वेरी मच स्पॉन्सर्स. और उसके अलावा जितने भी हमारे व्यूवर्स हमारे श्रोता हैं बहुत बहुत धन्यवाद अपना साथ संघ और इस कड़कती धूप के अंदर इस लाइव प्रसारण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और स्पॉन्सर्स का एक मुख्य योगदान रहता है किसी भी
संभाग को सफल बनाने में, और ऐसे में उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। पटाखों की आवाजें गूंजी पर मुराद की टीम इस समय पूरी तरह से दबाव में नजर आ रही है, क्योंकि मात्र स्कोरबोर्ड पे 79 रन लगे हैं और 6 विकेट गंवाए हैं। तो यहां से मंजूर पांडव अब संभवतः नए बल्लेबाज होंगे, क्योंकि एक और उम्मीद की किरण और आदिल दादा का इस्तेमाल किया गया है। मंजूर पांडव भी डगआउट में बैठे हुए हैं और आदिल दादा भी एक बेहतरीन क्षमता के बल्लेबाज है, पर यहां उनकी कड़ी परीक्षा होगी इन परिस्थितियों में, क्योंकि दबाव में पूरी तरह से टीम है और इस दबाव से न सिर्फ निकालना है, अपने आप को स्थापित करना है, बल्कि एक बेहतर पारी खेलते हुए एक सम्मानजनक लक्ष्य तक रोकना है। तो एक कड़ी चुनौती, एक कड़ी परीक्षा आदिल दादा के सामने। 79 6 विकेट के नुकसान पे 13वें ओवर में। Is an ideal situation. Even if I am asked to bat at number 8, like this when team is 6 down, I would definitely love to have a candid conversation with captain. Keep me for number 11. I'm not going to walk in. It's a tricky situation for newcomer. Pressure is mounting, climbing. It's counting. And rest is mounting. When it comes to that pressure, it's the batters are falling like pack of cards. 6 of them back to the pavilion. 79 on the board. They're 6 down. The Sam team in MKT. The name was different. That was Frondes Motors. And they defeated the Sam team, 7th Street Muraad Cricket Club. In Jablipura, it was Royal Kasbiyar. And with the Sam name, the side is fighting it out once more and once again here at Pulwama. It's going to be one more title for Kasbiyar. What a season, what a year. They're enjoying, and Dada comes in at number 8. And again in 22nd WC. Hello, they're going to meet again, once again. What's going on? Who? It's just like the 8 repeat. And don't be merry at all, because it's all about going after against each other. And it's just like that. On 22nd of June, we will be live from WCL area. And we have a big event coming up here, Royal Cricket League. I think he completed that 3 tala. Yeah, exactly. In the meantime, here is Amir Aziz. Oh, what was that? Extra bounce, kicking. Abrupt moment of the surface over his bat. It brushed and kissed the bat down to the third man for 4. That was brought to you by Just Bukara. Welcome boundary, much needed one. And Nasir Kumar is here. He's looking at the surface right now. Looking beautiful, no doubt about that. MashaAllah. It is just for this, which we call the Shair-e-Islam. And in the meantime, it is 79 for 6 in a spot above the tight situation. Not just tighten at the screws, making batters toil hard here. Tough conditions to bat on. At the time of toss, everyone was talking about that. First 6 overs are going to be crucial, because there was a little cloud cover over here. It was a little cloud cover on during first 6 overs, but with the passage of time, clouds faded away and sun shined brightly over the center, and we saw 6 of the batters going back to pavilion, following one after another. It is 79 for 6. The 2 spinners, Akib Mir, he bowled first, we gone for 13. Second over, consider just 8 of that. But the second over, we saw the back of Sarshil Abbas. And it's where things changed once again. Sarshil was the set batter. He was undone completely by Akib Mir with that beauty of a delivery. He gave an air and loop to the ball. The next one waits for that one. It is just like that, stand the stall. No foot moment, negligible foot moment. A dot delivery. These dots are going to put pressure on batters. They need to break free and need to rotate strike. Dada shaping for that big shot again. He was eyeing onside, trying to go big. Is beaten again. He's got a slip in place. Asif Rasool in slip corner. You're watching JK Sports Time Facebook, moreover on YouTube. That's gone flat. And fielder does well. He's quickly onto the ball. Just a single. What could have been more than a single? But he's denied that. Just a single, and that brings Wasim Raza on strike. Former Ranji cricketer, dynamic player, special character. What he's gonna do? His side need him badly today. This time coming into the bat, works it away onto the onside. In front of square on the on. One more run taken. It's more than 80. 81, I think, on the board for the loss of 6 wickets.
Long way to go. Something is left for this side. They need to prolong this partnership till over number 17 or 18. Then allow the batters to come in and just exploit the conditions and exploit these 2 overs. I don't know that. I don't have the experience as per as the subject of concern you're talking about at the moment. We need a research scholar, and you call that Vidyarthi, who's going to find that subject and which is going to yield a good amount of information in the end. John Saab is enjoying his time here. 6 for 79. It is 6 for 81. Correction comes in from scorer. Thank you very much. And John Saab is enjoying his time here. He is a kind of celebrity in this part of the world. And John Saab, he is of next level. Well, the temperature is also affecting John Saab. You can see that. Flipping of lips, what I saw. It was just like that going on. But the next one, there is a big shot. Where is this one going? And that's gone all the way. We'll have to wait and watch. To me, it looked like it carried. It done the distance. Yes, it is. The signal from umpire. And with that 6, with that just about a maximum, there is addition in score. It is 80. It's 92 for the loss of 6. And something special for John Saab here. It's 92 for 6. As we are in over number 15. 15th over begins. It's 92 for the loss of 6. And this is what they need at the moment, Nazir. 92 रन 6 विकेट के नुकसान पे 15वें की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद पर छक्का आमिर अजीज के विरुद्ध। 3.1 ओवर में 23 खर्चे हैं और 1 विकेट उन्हें मिला है अब तक। ये 15वां ओवर 92 स्कोर बोर्ड पे लग चुका है मुराद का। वसीम रजा और आदिल दादा बीच मैदान में। दादा सामने। अगली गेंद आमिर अजीज की और इस बार तिरछे बल्ले के साथ उसको गाइड किया था। बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात थे। गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन बनने की संभावना थी नहीं। 92 पर 6 15वें ओवर में भारी मात्रा में दर्शकों उपलब्ध जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल लाइव प्रसारण। जी हाँ, बिल्कुल ये अच्छी खबर नहीं है क्योंकि मैदान के अंदर आप पटाखे फोड़ रहे हैं, वहां पर खिलाड़ी जो फील्ड कर रहे हैं और निश्चित तौर पे ये अच्छी खबर नहीं है क्योंकि सबसे पहले आपकी सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है। Well, absolutely right. This isn't good. This is against the rule of law, and this is against the spirit of the game. That's in the air. Who's gonna take this? Whitehead is getting there. He's taken that one. And Adil Dada departs. Wicket number 7 down. Raza isn't happy with Dada here. He's thrown his wicket away. Getting a kind of start. He's taken its wicket number 7 down. And Raza is stranded. Raza is frustrated out in the middle. And look at the crackers are going on. And Akimir was stunned, surprised. For a while, he was shocked with that firecracker which bursted, which gone off all of a sudden. And we saw only one thing, that was that smoke, the mist gone in air, the combustible material gone off. And Akimir was shocked. This isn't good at all. You mentioned it earlier on, their safety matters the most. Please make sure that they are safe and don't spoil the party here. देखिए, सुरक्षा की हमने बात की। सुरक्षा सबसे पहला जो है उद्देश्य रहता है और ऐसे में हालांकि वो अच्छी खबर नहीं है मैदान के बीचों बीच पटाखे फोड़ना। और अब जाकर के मंजूर पांडव नए बल्लेबाज आए हैं नंबर 9 पे बल्लेबाजी के लिए। और क्या वो यहां से कोई बड़ा प्रहार कर पाएंगे अपनी टीम मुराद सैम स्ट्रीट के लिए, क्योंकि 7वां विकेट गंवाया है 92 पे। और इस समय आवश्यकता भी है मंजूर पांडव की, उस बल्लेबाजी की, उस प्रहार की, उस कड़े प्रदर्शन की। और ऐसे में इन परिस्थिति में जब क्या अवसर मिला, हालांकि आसान रहने वाला नहीं है, दबाव की स्थिति है, पर इन परिस्थिति में वो किस प्रकार से प्रदर्शन कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और मंजूर पांडव को निश्चित तौर पे एक चुनौती उनके सामने, पर उस चुनौती को स्वीकारने का वो बेहतर तरीके से उसका विफल जानते हैं क्योंकि बड़े स्तर पर खेल चुके हैं, उनके पास अनुभव की कमी नहीं है। पर यहाँ थोड़ी सी परिस्थितियां कुछ अलग है क्योंकि 7 विकेट आपके सामने गिर चुके हैं, तो वहां से एकदम आकर के वो उस रिदम में आकर के वो बड़े स्ट्रोक खेलना आसान नहीं है। क्रिकेट भले ही महानरसिंह का खेल हो, पर एक बेहतरीन शानदार मुकाबला पर पूरी तरह से इस समय टीम गेंदबाजी की ओर से छाई हुई। जहां तक रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेहार की टीम का सवाल है, दर्शक खड़े होकर के इस समय पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं इस फाइनल मुकाबले को। और क्या लाजवाब प्रदर्शन, क्या बेहतरीन विजुअल्स इस समय अब तक पहुंच रहे हैं। मंजूर पांडव का आक्रमण हुआ है मैदान में
और ऐसे में जिक्र करें तो 92 पे 7 विकेट गंवाए हैं मुराद सेवन स्ट्रीट की टीम ने। ये पारी का 16वां ओवर संभवतः चल रहा है, 15वां ओवर चल रहा है। 93 पे 7 मंजूर पांडा सामने। और एक बार फिर अगर जिक्र किया जाए तो काफी ज्यादा मात्रा में दर्शकों जो क्षमता है इस मैदान की स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा, उससे कहीं ज्यादा दर्शक 2 स्लिप तैनात कर दी गई है। ये अतिरिक्त दबाव बनाने का प्रयास इसमें मंजूर पांडा पे, और पहली गेंद पर खाता नहीं खोल पाए। 93 7 विकेट के नुकसान पे 14.5 ओवर की गेंदबाजी। Crowd losing patience, talking of that grandstand, and that brings Manzoor Dar in at number 9. He comes in at 9. Amir Aziz goes and bows. Manzoor deep in crease, keeps it square on the on, picked up a single. This is good cricket from Manzoor. He needed that strike, and he's off strike for a while. He gets off the mark. He needed that first run. He lays bat onto the ball. It's 94 for the loss of 7, and we are done with over number 15. 5 overs are gonna come, and look at that portion, the grandstand. It's a kind of unrest there, which isn't good at all. They need patience, need to be patient. Oh, what's going on? Isn't good at all. They're just pushing each other, pushing to the wall. But someone need to stand tall to avoid that fall. As far as Muraad is concerned, there are 2 batters in the middle. Raza, he's a seasoned campaigner. He's got tons of experience. He's the man. He can bail them out. So is Manzoor Dar. The leading edge lob is off. Fielder is going there, but he's unable to make it to the ball in time. On the bounce, he drags it back into the play, and Manzoor is back for the second. Leading edge lob it off. There was a kind of extra bounce, nearly getting rid of Manzoor, batter of Manzoor, but he survives. And it is 96 for the loss of 7, as we are in over number 16. In the meantime, here is Akimir again. Stand as tall, guided. I was directed. Well, that one fine is backward a point in place. Not for runs, but Manzoor, it's the high time to perform. Once more his team needed him badly, and he's in at number 9. What he's gonna do now? 7 down, 96 on the board. Hit hard through covers. There is production. Bilal Ghazi, only a single, 97. But the way bowlers bowled it in, the way they turned it on its head, you're gonna give full credit and full marks to the bowling unit and captain, the way he rotated his bowlers and their fielders. They're backing their pack. It is a team effort. It is a pack and a team working hard here at the centre and trying to make things possible for their side. That's Upish down to Burris long off. Gonna fall short again. One more run. He's going back for the second. And Raza is so quick between wickets. He's a good runner between the wickets. He is a good athlete. He's a super athlete. And look at the running between the wickets. He's so quick, electric quick. And in no time, in a blink of an eye, he's back for the second. Good running. Score propelled to 99 for the loss of 7. 99 रन और अगली गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। उस और खिलाड़ी है जहांगीर लोन, क्या पहुंच पाएंगे अथवा नहीं। और गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था कुछ रन बटोरने का। 2 रन और खाते में, और इसके साथ ही 100 रन पूरे होते हुए मुराद सेवन स्ट्रीट के 101 7 विकेट के नुकसान पे 16वां ओवर वर्तमान में मंजूर पांडव और उनके साथ वसीम रजा, ये नाबाद जोड़ी मुराद सेवन स्ट्रीट के और से बल्लेबाजी करते हुए काफी घमासान का ये मुकाबला। पर पूरी तरह से जैसा कि हमने जिक्र किया, कप्तानी बहुत बढ़िया, गेंदबाजी बहुत बढ़िया, बॉलिंग चेंज लाजवाब हुई आज रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बिहार की ओर से। एक और सिंगल खाते में जोड़ता हुआ, और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच गई है 102 7 विकेट के नुकसान पे। और यहां ओवर समाप्त हो चुका है, 16 ओवर की समाप्ति, 102 7 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल बचा है। निर्धारित 24 गेंदें और 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 40, तो 145 150 के आसपास लक्ष्य खड़ा कर सकती है यहां पर टीम। और मंजूर पांडव के साथ अगर जिक्र करें, वसीम रजा 2 दिग्गज खिलाड़ी है। मंजूर पांडव जो बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता रखते हैं, यहां उस प्रकार का प्रदर्शन मंजूर पांडव को एक बार फिर करना होगा इस फाइनल मुकाबले में, और वो क्षमता दिखानी होगी जिसके लिए वे जाने जाते हैं। दर्शकों का शोर, भारी मात्रा में दर्शक, जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल लाइव प्रसारण आप तक पहुंचा रहा है। 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 102 रन बना लिए हैं
मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम ने रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे के विरुद्ध 16 ओवर में 4 ओवर का खेल बचा है। आके मीर 4 ओवर 32 रन 1 विकेट, अच्छी गेंदबाजी और सभी गेंदबाजों ने आज बहुत ही बेहतरीन आक्रमण किया है। वो बॉलिंग चेंज, छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल करना, वो बुद्धिमानी का परिचय कप्तान ने दिया। फील्डिंग बहुत बढ़िया रही, अनुशासन गेंदबाजी में दिखा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन प्रदर्शन फाइनल मुकाबले में। अब तक के 16 ओवर्स की बात करें रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे की गेंदबाजी में। 7 down, 1 or 2 on the board. Short pause in play. 4 overs are gonna come. Raza needed a kind of hydration break, and likewise, we also needed a kind of breather in the count box. You're watching JK Sports Time Facebook. Moreover, it's live on YouTube. You can press the bell icon and be the part of YouTube family. And let's hope for the best from your side. Thank you very much, all the listeners. Thanks a million and billion. Play is about to resume. And look at the crowd. It is manifold, huge crowd. People thronged. It is jam-packed stadium right now here at Sports Stadium Pulwama. Hot and humid atmosphere, climate here at the center. Lefty walks in with a message for the two batters. These two need to bat till the very last moment. If they are to finish around 130-140, Manzoor need to bat till the very last moment. And Raza has to ensure and make sure that he has to assure his side that I am still here. I'm going to battle it out. I'm going to take my side to the shores of some respectability, I can say that. It's 1 or 2 for 7. Well, in the meantime, over number 17 is about to start. It's going to be Roof Bashir Topre. Is it interesting? Roof for the first time is going to roll his arm here. He's going to roll his wrist over the ball. Not use it. He's going to bowl in over number 17 and he can't finish his quota. पर बिलाल गाजी का भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। Oh, interesting. What a combination. That's why it is the superb team of the valley nowadays. They have all the basics covered and cleared. Isn't spinners, spacers, and those all-rounders in block, and they have everything in store. Roof Bashir to produce over number 17. And he's knocked him over with the very first ball. Wasim Raza is gone. First ball from Roof. The Budgam ball rises to the occasion. And Raza is undone. It's wicket number 8 down. What a delivery. There was a kind of a reverse wobble in air. Then coming into the bat, he had no idea. It created a kind of corridor, a space between bat and body. And ball going on to hit the timber. Stummers rattle it. Wicket number 8 down. 7th Streets, Muraad Cricket Club, RA down. Is going to come in at number 10. It is Samir Bell. Is he going to ring the bell today? He needs to ring the bell here. It's the high time. Set the alarm. And look at that, a kind of a tornado. We call it tornado. Oh, it's making that kind of Mexican cycle, the waves, those currents. Well, going on at the moment, concentric circles we call it. Have you ever seen that? Throwing that pebble on water. Have you seen that? Have you done that? Those concentric circles. Well, that was a tornado. Well, coming back to the game, it is 1 or 2 for the loss of 8. In a spot of both the top situation and a tight one. As Bell comes in at number 10. What is going to do now? Muraad. They are down and out again. What's going on? Oh, lefty. Stay with your boys and stay together. Have a discussion. And tornado is on its way, but we hope that this side will remain okay, inshallah. But that was of high intensity. Look at those umbrellas, just gone off and went off in a flash. That brings the number 10. What he's going to do now with the bat, as Bell comes in at number 10. They're 8 down, 102 for the loss of 8. 3.5 balls are going to come. To me, if they bat through the 20 overs, they can still finish at a 130-140 because they have 23 balls at their disposal. Someone need to bat through. Who's going to bat through the innings? Who's going to carry his bat till the very last ball? Only the time will tell us. Manzoor Dar is there. He has to play his part. Big part. He has a role to play in today's match. It's a match worthy of the final high-octane game underway. It's a must-win clash. Their respect is at stake. They lost twice this season against the Sam side, and the third one is on cards. And that fourth game is coming your way on 22nd of June
it's going to be North Kashmir WCL again. Muraad will face the likes of Royal Goodwill there. Here it's Royal Kasbiyar. And that Royal's ride is continuing this season. They persist. Their perseverance, unrelenting, unwavering passion and conviction for the game is of next level. Believe me, it's taking some doing and they're just enjoying the ride once again and once more. How many times they're gonna ride over? They're just trying to go through all the time, and every day is not a Sunday, but for this side it looks like, and it's just like that fun going on, having fun time from one end to the other end. Oh, what a delivery to welcome newcomer. Nasty one. Bell talking about that it was a high ball. What can I do? But Roop says, are you okay? He says, I'm fine, buddy. But that was a kind of a delivery. We call that nasty one. It hits him on the body. He says, I'm going to bite the bullet. I'm going to carry on and continue. And this is what you need. The great athleticism is all about fight it out till the very last moment. But that was banged in shot. And Roop Bashir is capable of doing these things and wonders. Look at this side. Roop is operating in over number 17 in his very first over, and he removed that big fish, the former Ranji cricketer Wasim Raza, on his very first ball. Look at that one. What can Bell do? Sorry to say, as far as Bell is concerned, he is dwarfing in size, unable to ride on the bounce, and ball kicking like that a fighter jet. It took off. Jeff or a GP. He's on to the batter. No idea. It's a dot again. It's 1 or 2 fate. अच्छी बल्लेबाजी करनी हो गई यहाँ। समीर बेल थोड़े से दबाव में नजर आ रहे हैं। रूप बशीर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ इस बार दिशा मिल गई। उस रफ्तार का इस्तेमाल किया, गैप में गेंद पीछे खिलाड़ी और फील्डिंग कमाल के, शानदार फील्डिंग आके मीर धरा और निश्चित तौर पर ये चौका जरूर बचाया, पर 2 रन और खाते में जुड़ते हुए और 2 रनों के साथ रन संख्या 104 8 विकेट के नुकसान पे 17वें ओवर की ये गेंदबाजी। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला, पहली पारी पूरी तरह से यहाँ पे दबाव में टीम। हालांकि 104 रन बने हैं, 8 विकेट खोए हैं। मंजूर पांडे नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है और समीर बेल जो अभी आए हैं और इस समय सामने हैं रूप बशीर के पहला ओवर। विकल्पों की बात करें गेंदबाजी में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आसिफ रसूल ने 4 ओवर की गेंदबाजी, आकिब मीर ने 4 ओवर की गेंदबाजी, इश्तियाक रसूल ने 4 ओवर की गेंदबाजी। रूप बशीर का ये पहला ओवर है। आमिर अजीज ने भी 3 ओवर समाप्त कर दिए हैं और उसके अलावा आकिब मीर ने भी गेंदबाजी की है। तो कहीं ना कहीं अगर जिक्र करें आपके पास विकल्प गेंदबाजी में बहुत सारे हैं। बिलाल गाजी का इस्तेमाल अभी होना बाकी है और ऐसे में जिक्र करें, जी हाँ बिल्कुल, निर्धारित समय की अगर हम बात करें 3:34। हालांकि अभी भी पहली पारी में कुल मिलाकर 3 गेंदें और उसके बाद 3 ओवर, तो कुल मिलाकर 21 गेंदों का अभी आना बाकी है पहली पारी में और उसके बाद फिर दूसरी पारी प्रारंभ होगी। तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। इस बार स्ट्रोक बेहतर, कमाल का स्ट्रोक, गैप में खूबसूरती के साथ गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका समीर बेल के बल्ले से निकलता हुआ रन संख्या को बढ़ा दिया इस चौके की सहायता के साथ। हालांकि दर्शकों का शोर गूंजता हुआ और ऐसे में मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम इस फाइनल मुकाबले की पहली पारी में 17 ओवर की समाप्ति के बाद 108 8 विकेट के नुकसान पे समीर बेल 6, मंजूर पांडे 4 5 गेंदों से। Cover drive and this over number 17 on a high. A down 108 on the board. 3 overs are gonna come. It's 3:30. What's going on? It's 3:30 by my watch. It's too late. It's too late. The officials and the match referee need to understand that we're running short of time here. I understand that steamer. Exactly. Well, it's 1-8 for the loss of 8. Bilal Ghazi to operate in over number 18. You're watching JK Sports Time Facebook. Moreover, it's live on YouTube. And those who are watching on YouTube, press the bell icon and be the part of family. Subscribe to our channel and press the bell icon to get notified and to receive those notifications in abundance, in bulk. Over number 18, Bilal Ghazi to operate. Manzoor Dar is ready. First ball, leading edge, and that's gone all the way for a maximum, just before a 6 coming. First ball, edge of the bat. It's edgy, an edgish one all the way to have a fun. There is 6 for Manzoor Dar and Muraad 114 for the loss of 8 wickets. And this is what you need, 5 hooks, and Manzoor comes up with that one. It hardly matters how they come. It hardly matters. Manzoor is gonna go after the bowlers.
He's gonna go after. What he's gonna do second time. And one of our beloved listeners, and we was talking about that, he's got the thunder power. And you call that thunder with the bat. Is he gonna use that storm here? Is it going to pound or storm? This isn't good again. Crackers going on. When we're gonna learn the lesson? It is the combustible material. You're gonna get nothing out of it. And look at that, ashes and dashes. Your money is turned into ashes and dashes. Deep in crease. Had that connected, would have been in the man-chok Pulwama. But no connection. Connect is thin air, it's into the safe hands of wicket keeper. Well, I just suspect that, assume that, had it connected, would have been somewhere beyond the boundary line. It is 114 for 8, over number 18. Bilal Ghazi, first ball 6, second ball dot. Where is third one gonna go? This is over number 18. It's a 20 over game. Manzoor steps leg side, creates room. Wanted to hit that one with the tide. Misses that one. And everyone around the center, it was not just about that oohs and ahs. It was something like that ooh yay was going on, as they were expecting a whooping hit off his bat, but it doesn't connect that. 114 for 8. 114 8 विकेट के नुकसान पे 17.3 के बाद गाजी अगली गेंद लेकर के पांडव के लिए एक और बेहतर गेंद और हर गेंद पे प्रहार किया है। पिछली 3 गेंदों से लगातार वो प्रहार कर रहे हैं, पर कनेक्शन सही नहीं हुआ है, मिलन सही समय पे हुआ नहीं है गेंद और बल्ले का, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। 114 8 विकेट के नुकसान पे 18वां ओवर वर्तमान में बिलाल गाजी का पहला ओवर रूप बशीर ने 1 ओवर की गेंदबाजी की है। और इसके बाद अगर जिक्र करें तो रूप बशीर के अभी 3 ओवर आने बाकी हैं, बिलाल गाजी के इस ओवर के बाद 3 ओवर आने बाकी हैं। तो एक बेहतर और शानदार मुकाबला पर मुराद की टीम 114 तक सीमित। एक बार फिर अच्छी गेंद, फिर बेहतर गेंद, पूरी तरह से यहां पर बीट करते मंजूर पांडव को गेंद जाता भाई विकेट कीपर वाहिद तेली के दस्ताने में। 114 8 विकेट के नुकसान पर रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा का ये फाइनल मुकाबला। और पहली पारी के आधार पर अगर हम बात करें तो 18वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है और मुराद 7 स्ट्रीट ने 114 रन बनाए हैं अभी तक, 8 विकेट खोए हैं गाजी इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर के। पांडव के लिए एक और अच्छी गेंद, पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, फिर वही परिणाम, फिर वही कहानी, ओवर समाप्त हुआ 18 पूरे 114 8 विकेट के नुकसान पे। Lone 6. First ball we saw 6 coming, then 5 dots on the trot, and Manzoor kept calm. Manzoor, he was trying to swing the ball, but unable to lay baton to the ball. There was no connection. He connected the thin air time and again. In 18th over, 12 balls remaining, over number 19, and then it's going to be the over number 20 coming up. Who's going to bowl that 19th over, or the second last over of inning number 1? It's going to be Rubashit operate from Calm Boxing. Crowd in good numbers. Sun is behind clouds for a while, and this is what we need. Meshati here at the center. They want this. They want sun behind clouds today, and it was expected. Clouds will be largely looming on today's match. It's 114 for the loss of 8. 12 balls, 2 wickets in hand. Bell is on strike. Those who are watching JK Sports Time YouTube, subscribe and press the bell icon. Be the Potter family. This is going nice here at Sports Stadium Pulwama. Late start to the finals. And finally we're in over number 19. Roof in his second over, 1 over. 1 for 6. And Bilal Ghazi 1 over, none for 6. Pressure of first ball. Dances down the track. Dancing, no connection. And Bell is now trying to shadow practice that what should have been done. It was better to open the bat face and lift it up over the extra cover. There isn't anyone behind that fielder who's on edge of the circle. You're going to get more than 1 for that. But stay patient, deep in crease. Roof lost his way. He's going to reload and re-bowl that one. Going to go back to the top of his bowling mark. John Saab is enjoying. And he's the natural entertainer. He's got a lot of fame. He's a famous person in this part of the world. In the meantime, Roof again. Miss shot to fielders on offside. Roof goes and oh, look at that one! What a connection! And what a shot! What a balance! Riding on that occasion. He rides on the bounce. And it's gone over extra cover. Sublime. Glorious and gorgeous. Just to Bukhara maximum 128.
खूबसूरत ये स्ट्रोक था समीर बेल का, हालांकि अतिरिक्त उछाल था गेंद में, जगह बना करके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन अर्जित किए जस बुखारा छक्का 120 8 विकेट के नुकसान पे 18.2 19वां ओवर रूप बशीर का दूसरा ओवर। अगली गेंद लेकर के तैयार समीर बेल सामने 12 पे 7 गेंदों से, इस बार फिर जगह बना करके डाउन द ट्रैक निकले जरूर थे पर संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में चले गई बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 120 पे 8, ये 19वां ओवर। रूप बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने इसमें बल्लेबाज समीर बेल, नॉनस्टॉप की चोट पे मंजूर पांडा और जहांगीर की अगर हम जॉन साहब की अगर बात करें वो एंजॉय करवा रहे हैं श्रोताओं को और श्रोता भी एंजॉय कर रहे हैं। अगली गेंद रूप बशीर की समीर के लिए और इस बार एक और अच्छी गेंद थी, हालांकि दोनों बड़े रन के लिए यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच गई है 121 8 विकेट के नुकसान पे 19वां ओवर। मुराद 7th स्ट्रीट के लिए इस समय इस पहली पारी के आधार पर रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बिहार की ओर से फाइनल मुकाबले में 121 पे 8 18.4 2 के 2 खाना बाकी 1.4 ओवर में मात्र 12 रन खर्चे और 1 विकेट अभी तक प्राप्त किया है रूप बशीर ने। अच्छी गेंदबाजी, अनुशासन न पितुली किफायती गेंदबाजी की है रूप बशीर ने मंजूर पांडव के लिए और इस बार पांडव का कनेक्शन सही हुआ और शानदार फील्डिंग आमिर अजीज द्वारा, बहुत ही बेहतरीन तेज स्ट्रोक था वो भी मंजूर पांडव के बल्ले से निकलता हुआ और वहां न सिर्फ गति को कम किया बल्कि मंजूर पांडव को मात्र 1 रन तक सीमित रखा। 1 रन और खाते में 122 8 विकेट के नुकसान पे 18.5 आखिरी गेंद इस ओवर की। उसके बाद अंतिम ओवर पर बहुत कम स्कोर तक सीमित रखा है इस मैच में रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बिहार के गेंदबाजों ने, चाहे वो आसिफ रसूल हो, इश्तियाक रसूल, बिलाल गाजी, रूप बशीर, आमिर अजीज, आकिब मीर, जिन भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। एक और अच्छी गेंद और पर यहाँ पर चौका मिल जाएगा उपहार के रूप में, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका और ऐसे में अंदरूनी भाग लगने के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई, चौका मिला, ओवर समाप्त हुआ 19 पूरे 125 8 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर का आना बाकी। 6 balls are gonna come. It's going to be Manzoor Dar in the middle and he's got Sameer Bell. Bell is trying to switch gears and this is what you need. At the fag end, there is nothing to lose, everything to achieve. As he lost 2 finals on the trot against the same combination. One in MKT, Magab Knockout Cricket Tournament. The second one we saw in Jabalpur this season and it's the 3rd one underway. The 4th one is gonna come your way on 22nd of June and may remind you we have one big tournament coming up. It's going to be a Royal tournament coming up, Royal Premier League. It is absolutely royal. Dollars are going to be going from one end to the other end. It's going to be all about dollars and it's going to be day-night cricket tournament. That is important thing to be played on turf. Oh, it's going to be special experience for a young lads. Leading edge is taken at 3rd man. Manzoor Dar goes in the form of wicket number 9, is taken at 3rd man. And Adil Rishi, he was having something with Adil 50 there. And he walks away and Manzoor Dar is taken at 3rd man. It's wicket number 9. That follow wicket brought to you by Just Bukhara. Manzoor walks away, unable to do something special with the bat. Everyone expected Manzoor will do something special. He failed in the end. It's the miserable outing to the big man like Pando that brings the number 11 with 5 balls remaining in match inning number 1. It's going to number 11 to come in. Who walks in at 11? I think that spinner Zaid Nabi comes in at number 11. He's also capable. What he's going to do now? But Zaid need to make sure that he's going to bat remaining 5 balls. It's 1, 2, 6 and try to hit 1 or 2 balls out of the park. Try to finish around 135, 136 and you can still take it to 140. You have 5 balls and you need 2 big shots. You're gonna finish around that in the vicinity of 138, 139. Bilal Ghazi in his second over, 1.1, 1 for 6, getting rid of Tanjaman. Manzoor Pandu was taken, was caught at 3rd man. You're watching JK Sports Time Facebook. Moreover, it's live on JK Sports Time YouTube. And first inning is about to end. And crowd, they're going from one end to the other end. What's going on? Why they're moving away? They're just trying to walk away. As it's 1, 2, 6 for the loss of 9. 5 balls are going to come. In over number 20. It's flooded. It's flooded at the moment. Right in front of a com box.
And it's just like that opaque surface. I can't sight anything. What's going on the other side of that line? The queue, as far as the crowd is concerned, they're walking away. It's 1, 2, 6 for 9. These are the disturbing scenes here. 1, 2, 6 for the loss of 9. Over number 20. Ball number 2 is coming up. And ball number 2 is already done. It's 1, 2, 7 for 9. Zaid Nabi brings Bell on strike. Bell has 4 balls. Bell should go deep in crease and smoke it away. It's the high time. 4 balls remaining. 1, 2, 7 for 9. Inning number 1. Here is Ghazi again, and that one, he variated that when he took pace off the ball, rolled fingers over the ball, and Bell shaping for that sweep shot in the end. He was trying to work it away onto the onside, doesn't connect. A dot delivery, 9 for 1, 2, 7. 127 9 विकेट के नुकसान पे 19.3 ओवर की गेंदबाजी. मात्र 3 गेंदें बची हैं पहली पारी में. 127 रन बनाए हैं मुराद ने. अगली गेंद लेकर के तैयार बिलाल गाजी. हाँ, इस बार खेला जरूर ऑन साइड में, दौड़ पड़े रन के लिए और वहां पर रन जरूर मिला और रन संख्या में वृद्धि होती हुई 128. आखिरी ये क्षण बचे हैं, आखिरी गेंदें बची हैं और आखिरी जोड़ी इस समय बीच मैदान में. मुराद 7th स्ट्रीट की ओर से रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार की अगर हम बात करें, गेंदबाजी बहुत बढ़िया. 128 पे 9, 19.4. 2 गेंदों का आना बाकी मात्र इस पहली पारी के आधार पर. और देखना होगा क्या लक्ष्य रहेगा पहली पारी के आधार पर इस फाइनल मुकाबले में. रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार के सामने मुराद 7th स्ट्रीट की ओर से आखिरी 2 गेंदों का आना बाकी. बिलाल गाजी 1.4 ओवर, मात्र 5 रन खर्चे, 1 विकेट उन्हें मिला है. यह पारी का आखिरी ओवर. 19.4 ओवर की गेंदबाजी. 128 9 विकेट के नुकसान पर. एक और बेहतर स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका मिलता हुआ. इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या पहुंच गई है 132. 132 9 विकेट के नुकसान पे और पहली पारी की अंतिम गेंद का आना बाकी. 132 9 विकेट के नुकसान पे 10 की अगर हम बात करें 10 ओवर में, हालांकि पूरी तरह से वो पारी लड़खड़ा गई थी और उसके बाद से वापसी का अवसर नहीं मिला. हालांकि बीच में 1-2 छोटी छोटी साझेदारियां देखने को मिली, पर आखिरी गेंद का आना बाकी. और यहाँ पर देख लीजिए आप, दर्शक के समय पूरी तरह से मैदान की ओर अग्रसर हो चुके हैं. तो ये मानसिकता थोड़ा समझ से परे है और इसको समझने में मैं समझता हूँ काफी समय लगेगा. यहाँ रन आउट के रूप में मैदान से बाहर जाना पड़ेगा. तो इस प्रकार से पूरे 20 ओवर में टीम ऑल आउट हो गई. 132 पे 133 रन चाहिए रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार की टीम को इस मैच को जीतने के लिए, फाइनल मुकाबला अपने नाम करने के लिए. जैसे ही दूसरी पारी प्रारंभ होगी दोबारा लौट आएंगे, आप बने रहिएगा. नहीं, अपने स्कोर लेकर बंद किया. स्कोर करो वो आवाज ऑडियो.
arrived. It's going to be Ishtiaq Rasool, and he's got his counterpart to join him. Target is 133 from their allotted 20 overs. Muraad, they were already out in the middle. They were in a hurdle, still in a hurdle, in a kind of a hurdle. They're yet to disperse out. Crowd in good numbers to witness the second innings of the final match here at Sport Stadium, Pulwama. 133 to win it again, as far as Royals are concerned, against the same opponent, same opposition, Muraad 7th Street Cricket Club. And look at the crowd in good numbers. Huge crowd is in. It is a jam-packed stadium, as expected. As usual, it's again a jam-packed. It is a packed stadium. 133 is what they're looking for. Someone has lost his wallet. If anybody found that, please report the com box. And it was announced on the microphone earlier on. During the first innings, we heard that there was an announcement going on. Someone has lost that wallet. But we shall come to know after the culmination of the game. And finally, two teams out in the middle. The two openers and Muraad in a kind of hurdle. The two officials, the two umpires out in the middle. And Jan Saab is having some candid moments with the two openers in the middle. Nazir, crowd looking forward to this chase. It's a paltry one. 133. To me, should be easy one. Should be a walk in the park. But you know that this is the game of glorious uncertainties. And we have too many whistleblowers here. The one who blows the whistle is Jan Saab there. And it's game time around the corner. And Nazir, please come in and talk about what's going on at the moment. It's 133 is what they're looking for as far as the Royals are concerned. धन्यवाद मुरम्मर और अपने श्रोताओं का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करते हैं। दूसरी पारी अब प्रारंभ होने जा रही है। जैसा कि ये स्पष्ट हो चुका है, 133 रन चाहिए 20 ओवर में रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार को इस मैच को जीतने के लिए, और ये खिताब अपने नाम करने के लिए दो प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। और अगर दर्शकों की बात करें, भारी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध हैं, जो हम इससे पहले भी समय समय पे सूचना दे चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आज दर्शक उपलब्ध है रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए। और इधर हमारे श्रोता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, दोस्त जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। JK स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूसरी पारी प्रारंभ होने जा रही है। इश्तियाक रसूल एक छोर पे नजर आ रहे हैं और दूसरे छोर से देखना होगा उनके साथ किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। और एक अच्छी शुरुआत संभवतः आदिल रेशी होंगे उनके साथ। दो दिग्गज खिलाड़ी, दो महान खिलाड़ी, दो अनुभवी खिलाड़ी। ये प्रारंभिक छोड़ी इश्तियाक रसूल और आदिल रेशी के रूप में रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार की ओर से 133 का लक्ष्य। और कहने को अगर देखा जाए तो छोटा लक्ष्य जरूर है, हालांकि उतना बड़ा लक्ष्य यहाँ पर सजाने में सक्षम नहीं हुई टीम, पर क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा। यहाँ शुरुआती ओवर्स में आप किस प्रकार का वो गेंदबाजी का कर्म करेंगे, किस प्रकार की आपकी शुरुआत गेंदबाजी में होगी, किस प्रकार की कप्तानी होगी, किस सकारात्मक सोच के साथ आप छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल करेंगे, वो एक बेहतर ऑप्शन रहने वाला है। क्योंकि स्मिर बेल हमेशा की तरह यहाँ गेंदबाजी प्रारंभ करने जा रहे हैं। इश्तियाक रसूल जो कि गजब के फॉर्म में है, हाल फिलहाल के मुकाबलों में बात करें तो उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। और आज फाइनल मुकाबले में भले ही दबाव होगा, पर एक बात तो तय है कि बड़े लक्ष्य का दबाव नहीं है। मात्र 133 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए, और ऐसे में एक साधारण और एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। वहीं पे बल्लेबाजों का प्रयास रहेगा, एक मानसिकता रहेगी, एक अप्रोच रहेगा कि शुरुआत बेहतर मिले और इस छोटे लक्ष्य तक आसानी के साथ पहुंचा जा सकता है। और यहाँ दर्शकों का भी अच्छा खासा जो आक्रमण हुआ है उसका दबाव भी जरूर रहेगा। पर रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम के पास वो क्षमता है बल्लेबाजी में। इश्तियाक रसूल, आदिल रेशी, नासिर कुमार, उसके अलावा जहांगीर लोन, वाहिद तेली, उमेश सिद्धू आपकी टीम का हिस्सा है। तो बल्लेबाजी में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर रहने वाली है प्रारंभ में इस गेंदबाजी के सामने ये बल्लेबाजी देखते हुए। Bowlers need to keep things tight straight away. The only way to win this is to pick wickets at regular intervals. They need to strike straight away. From ball one, they need wickets. They need in a kind of a cluster. 133 is what they're looking for. From there after 20 overs, Nag is in. He's got Adil Rishi. And you know that Rishi, the way he played in that Legends League? Oh, it was wonderful performance. The local lad from Valley telling the world
that I was the champion of my time. And that is why it has been well said, class is permanent, form is temporary. And he wanted to come in. मैंने पर मैच शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पूर्व ये जो व्यक्ति आपकी स्क्रीन के सामने से इसका ये जो हमारा कमेंट्री बॉक्स है उसकी दाईं ओर है, इस पे जरूर सोच विचार किया जाएगा. Thank you very much. First ball of run chase. It's Nog, right on top. Find us Raza on the boundary line. Will just be one. It's one for none in over number one. Nog up and running, underway. We chase here. It's one on the board. They're chasing 133. And that brings Rishi on strike. Sameer Bell operating in over number one. He's going to roll his wrist over the ball. What he's going to do now, can he weave that magic? Is he going to trap the batters like that a fly in the web? It's one without loss. Johns up. Entertaining crowd here. Conveying a message. Shows some decency. In the meantime, here is Bell again. Deep in crease. Adil Rishi. A kind of a rush on that occasion. And it was a quicker one. Adil Rishi unable to connect that one properly. But nonetheless, he's going to get one for that. It's 2 for none in over number one. 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने खाते खोल लिया. आदिल ऋषि 1, इश्तियाक रसूल 1. समीर बेल ने शुरुआत की है गेंदबाजी में. मुराद 7 स्ट्रीट के लिए 133 बनाने हैं. अगली गेंद 2 बगैर नुकसान के नाक के लिए ऑफ स्टंप से बाहर. जगह मिल गई. स्ट्रोक खेला हवा में. पीछे खिलाड़ी है और कैच लपक लिया. नाक की पारी हो गई समाप्त. इस मुकाबले में कुछ न कुछ है. अगर आप पावर प्ले में 2-4 विकेट पटक लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये छोटे लक्ष्य आमतौर पर काफी गंभीर हो जाते हैं. Maybe, maybe not. But there is the wicket number one. और पटाखों की आवाजें गूंजते हुए और नाग का विकेट. मात्र 1 रन बनाया. 2 पे पहला विकेट गंवाया यहाँ रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बिहार ने. और दर्शकों का उत्साह, हर्षोल्लास देखने लायक. ये क्रिकेट की इस परिपक्वता की एक जीती जागती तस्वीर आपके सामने इस मुकाबले में. निश्चित तौर पे कहा जाए तो पूरी तरह से दर्शकों से खचाखच मैदान और एक हर्डल बना करके सोच विचार किया जा रहा है. यहाँ नाग का विकेट मिल चुका है. शुरुआत में है 133 के जवाब में. शुरुआत बहुत बढ़िया. नाग ने बनाया 1-2 पे पहला विकेट. Huge wicket, big strike. He struck gold in over number one. And Nog is gone. He's on his way back to pavilion. Crackers are going on. Jubilation and joy for the fans of Muraad. And you can see that on your screen right now. That smoke and mist goes in air. That brings Asif Rasool in at number 3. And I still remember that Shalabu game where he was shocked with that firecracker. It's 2 on the board for the loss of 1. Now could only contribute a solitary run. He was sent packing. Razat as well on the boundary line. It isn't easy to balance yourself on the boundary line on his toes. Just inches inside. Took that good catch and sent Nog on his way. That brings Asif Rasool. He walks in number 3. An ideal position for Asif Rasool. But it's a tricky situation too for newcomer as they one down. Early blow. Early fall of wicket. And this is going to boost to the confidence of Sameer Bell here. Bell picks up one. Much needed breakthrough for Muraad and Sameer Bell. He's designing the field on either side as we watch Bell again to Asif Rasool. What he's going to do today, there is a slip in play. Zaidar, who failed with the bat, is in slip cordon. Bell struggled. Picked up that huge wicket of Ishtiaq Rasool. That's quite some achievement as far as Sameer Bell is concerned. Equally spotted by Wasim Raza on the boundary line. Listening to the noise, the roar from crowd. It is just like that oohs and ahs going on. Oh, listen in again. I call it rumble and bumble. Exactly, and Pulwama is humble. Back to the bowler. Find a bowler in the follow through. Not 4 runs. It's 2 for 1. Crowd back again in good numbers to witness inning number 2. We shall come to know which side will rise to the occasion and walk away with the trophy. Wide of the man at mid-on.
Would have been tight one needed directed, but he's home, he's safe, no harm done. It's 2 for 1 in over number 1. एक ओवर की समाप्ति, 2 रन बने हैं और एक विकेट गवा है इश्तियाक रसूल के रूप में। हालांकि आसिफ रसूल और आदिल ऋषि, ये नाबाद जोड़ी, आसिफ रसूल को खाता खोलना है, 3 गेंदों का सामना किया और वहीं पे आदिल ऋषि ने 1 गेंद का सामना किया है, 1 रन बनाया है। तो शुरुआत अच्छी रही है गेंदबाजी की। अगर हम बात करें मुराद 7 स्ट्रेट की, समीर बेल ने वो साधारण, वो सही दिशा, वो लंबाई, नियंत्रित गेंदबाजी, बहुत ही बेहतर शुरुआत दी है अपनी टीम को। पर यहाँ से विकेट चाहिए, आपके पास मात्र एक ही उपाय है, वो विकेट प्राप्त करना। लगातार अंतराल के बाद विकेट प्राप्त किए तो फिर जाकर के एक चुनौती दे सकते हैं मुराद 7 स्ट्रेट की टीम। अन्यथा बल्लेबाजी में आपके पास बहुत सारे विकल्प है, वो दमखम है, वो क्षमता है बल्लेबाजी में। नंबर 8, नंबर 9 तक बल्लेबाजी है। नेवर की शुरुआत वसीम रजा का इस्तेमाल किया जा रहा है और अच्छी मानसिकता कप्तान की, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण दोनों छोर से प्रारंभ करवाया हुआ है और ये देखते हुए कि एक प्रयास किया जाएगा शुरुआत में और स्पिनर से, जी हाँ बिल्कुल, एक योजनाबद्ध तरीके से आपको गेंदबाजी करनी है। और अगर यहाँ 1-2 विकेट मिले शुरुआत में यहाँ से आने वाले सत्र में, तो फिर एक चुनौती रह सकती है। The other thing is that they love the pace up front. With a new ball, they want that pace to race and run away. But they use the spinners who are normally taking pace off. And it isn't easy for the batters like Rishi and Asif Rasool to take spinners on. But Rishi has got that caliber and class. Let's see what Raza is going to do now with slip in place. Adil Rishi, there is a man who's taken at long off. It's wicket number 2 down. That's what I was talking about. They took pace off again. It was all pitch to 1. Lures him into the big shot. He's taken at long off. Doesn't middle, doesn't time. Find his man. It's wicket number 2 down. Double strike. 2 balls. It's 2 wickets. 1 from other over and 1 from this over. And what a strike again. Adil Rishi on his way. Both openers gone back to hut. Muraad for a while on top. तो देखिए, मैच की पहली पारी समाप्त होने से पूर्व ये जिक्र किया जाता, जो क्रिकेट एक्सपर्ट है उनका मानना था कि स्पिन आक्रमण से शुरुआत करवानी होगी यहाँ टीम को। मुराद 7 स्ट्रेट को तो कहीं ना कहीं वो एक जाल बुन सकते हैं, वो एक योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी करा सकते हैं और ये कप्तानी की भी दाद देनी होगी। शुरुआत समीर बेल से और उसके साथ दूसरे छोर से तेज गेंदबाजी का क्रम जारी नहीं रखा, बल्कि स्पिन से दोनों छोर से गेंदबाजी करवाई। वसीम रजा जो एक महान गेंदबाज है, पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था और सीधे वहां पर आदिल ने कैच थमा दिया। दूसरा विकेट, 2 पे 2। ये दिलचस्प आंकड़ा है। 133 आपके सामने लक्ष्य है, पर 2 रन 2 विकेट। आसिफ रसूल नाबाद है और अब जाकर के नासिर कुमार आए हैं बल्लेबाज। Well, Nazir, it's a cricket match. It is in UEFA Champions League going on, and they're scoring after every attempt. It's 2 down, 2 on the board. Double wicket falling here. 1 brings 2, 1 brings many. As they're 2 down, just 2 on the board. We are in over number 2. The 2 spinners are calling the shot. The job isn't done. Royals need a partnership. And the 2 men in the middle, the combo knows better. Who knows better than them? They know how to battle it out, how to fight it out. And let's see how these two will put on a show and take this game away. Are they going to do something special with the bat? Only the time will tell us. As we watch, Nasir Kumar comes in at number 4. 2 for 2 in over number 2. Wasim Raza strikes on his very first ball. Adil Rishi sandpacking. Crowd in good numbers. Huge crowd to witness. Inning number 2 here at Sports Stadium Pulwama. In the meantime, Raza is designing the field. He's got mid-on up inside. Long on, long off around the boundary line. Nasir Kumar! First ball! It is a humongous hit. Out of the center for a maximum. Just Bukhara 6 coming. कमाल का स्ट्रोक आते ही यहाँ स्वागत किया नासिर कुमार ने और खूबसूरती के साथ गेंद को उठा दिया लॉन्ग आउट के ऊपर। जो बुखारा छक्का, 8-2 विकेट के नुकसान पे 1.3 ओवर की गेंदबाजी और नासिर कुमार को रोक पाना, ये एक चुनौती जरूर रहती है गेंदबाजों के लिए। Intent straight away. You are 2 down and Nasir Kumar says, I'm not gonna feel that pressure. I'm gonna take you on. And he belted that one on to the bank. And that's gone many a mile out of the center. What a connection and what a 6. That was a wonderful strike, clean as a whistle. As we watch Raza again. It's 8 on the board for the loss of 2. Conversation is going on. The conversation is going on. Everyone around Raza there, talking to Raza, how to operate, how to keep this lad under check.
how to contend. Nasir Kumar won't be easy. He's shown the intent. Attack is the best form of defense. This is what Nasir Kumar knows very well. In the meantime, play is about to resume. It's going to be Wasim Raza again. Conversation is going on. Captain and Bell telling Raza what to do under certain circumstances. Because it's Nasir Kumar. First ball, bang away. For a maximum 8 for 2. Over number 2 we are in. Target is 133. They need a partnership. They need someone who's going to battle it out. They need someone who's going to up the tempo and gear up a bit. And now he straight away announced himself here at the stage, telling everyone that this is Nasir Kumar, no look back. To avoid the throwback, I'm going to go after the bowlers. I'm going to throw my kitchen sink at everything here. As he brings up 6 on his very first ball, that it connected and it gone the distance. Crowd in good numbers. Listening to the noise again. It's noisier, it's hostile. And it's just like that rumble and bumble, rucks and roar. The joy and jubilation awaits all of us here at the centre. The team which will walk away with the trophy and that silverware. Hey, what's going on? And I'm going to explain this gaze from your side. Later on I shall come to that. But at the moment we're pretty much busy with the game. As we watch Raza, still conversation is going on. I think we lost the ball on that portion. It reminds me of the Bidwest Wanderer 6 against Ryan McLean. It was boom boom with that kaboom hit. Like that. And it was 157 meter huge 6. I can't say that was 157, it was around 127. Around that, it looks like, because we have 65-70 meter boundary on either side. But that's gone, look at that portion, it's gone into the orchard. So I can say that it's 127 meter. One we saw in that Midwest Wanderers back in almost 10 or 12 years back. And it's going to be a special thing, and it's going to be crispy, believe me. Well, it's going to be something special, believe me. Well, Nazir, I can't explain that, the joy and the jubilation, that's going to be a next level. Well, coming back to the game, finally back, ball is back onto the field. It took some time to retrieve the ball from that orchard. Well, he's talking of that, it's a famous dialogue as far as this lad is concerned. He's talking of that, it is just like that ande ball or something, what I heard earlier on. Well, later on we shall come to that. And what I love is, Nazir, we want that idli samosa along with dosa to enjoy that cup of tea. But at the moment, it's just like that. We're sweating here, so we don't need tea at all. And in the meantime, here is the next one. That is a solid block from Nasir Kumar. First ball 6, second ball typical Nasir Kumar defensive shot. Head still, eyes on the ball, kneels down with one knee and then blocks it back to the bowler. The next one again, gone again, and it's 6 again. Just Bukhara 6 coming. It is Nasir Kumar. Kneels down on one knee yet again, and he says, "Oh, Munawar, come on. I'm not gonna block him. I'm gonna go after." It was just kind of a solid block. But the next ball, it flies again. It's gone into the orbit, into the day sky here at Sports Stadium Pulwama. Another 6, 14 on the board. 2 wickets down. Oh, good delivery again from Raza. And Raza need to understand. Try to shorten the length. Don't go with the over pitch ones, because this lad is just waiting for that. And you're feeding him with those deliveries. We call that overcooked, like that of just Bukhara. So avoid doing this. Try to trap him. And that's what you require this time. Tuck around. That's a good looking shot. Sensible cricket from Nasir Kumar. Moves to 15. And overall it should be more than 15, I think. It is 15 for the loss of 2. And this over we saw 13 coming. 2 sixes. And that single 13 to Nasir Kumar from this server. And overall after 2 it's 2 for 15. 2 के बाद 15 नासिर कुमार ने इस ओवर में 2 छक्के लगाए. वसीम रजा के विरुद्ध कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जरूर लौटा होगा. आसिफ रसूल जो अनुभवी खिलाड़ी है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं. एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट का मुकाबला भारी मात्रा में दर्शकों उपलब्ध हैं और क्रिकेट का उत्साह जुनून देखने को मिल रहा है. और ऐसे में जिक्र करें एक बेहतरीन शानदार क्रिकेट का मुकाबला और खूबसूरत विजुअल्स है सामने. वाटर बॉटल्स जो हैं वो दर्शकों की ओर फेंकी जा रही हैं और निश्चित तौर पर ये एक परंपरा रही है इस प्रतियोगिता की, इस टूर्नामेंट के पिछले 2 एडिशंस की. ये एक अलग प्रकार की परंपरा जो है ये बाकी टूर्नामेंट से इस टूर्नामेंट को अलग प्रकार का बनाती है.
And this is good move from management. Oh, look at that one. He was about to celebrate, but that gone past to the stumps. Unable to hit the bullseye. Or he was eyeing on that occasion, unable to get that, unable to extract that in the end. It's 2 for 15 as we are in over number 3. You're watching JK Sports Time Facebook. Moreover, it's live on YouTube. Here is the next one. Flat. 6 again. Gone again. Smoked again. It's again and again. Nasir Kumar for you. This man is going to take bowlers and he takes him on. Belch it. Bang away. And that is just Bukhara maximum coming. What a connection again. 6 number 3 for Nasir Kumar. The beard man of Ali. He's got the Prophet of Sunnah on his face. We call it Shairi Islam. But the man has got that touch. He is in sublime nick and touch. It's 21 for 2. Crackers going on. It's just like that tuck and tuck. It is just like that boom boom and doom doom going on. It's 21 for 2. In the air! Should be taken. It's wicket number 3 down. Against the run of play. Listen into the noise again. Crowd is whistling. Crowd is whistling. Oh my word. Nasir Kumar is taken. It's wicket number 3 down. Against the run of play, leading it low but off. And wicket number 3 down. Dangerman gone. Dangerman departs. And listening to the noise again. It's noisy here. And they're enjoying every bit of it. And they are celebrating every bit of it. And they deserve that. What a game of cricket. And loving this game of cricket here at the centre. And it was just like that. Gone again. Smoked again. But he's taken this time round. It's no more again. It is a way back for Nasir Kumar. They're now 3 down. And that brings number 5. And they are distributing water bottles. This is a good move. And absolutely that portion, it is shady at the moment. It is in shade at the moment. And that's what they need at the moment. They're loving the weather on that portion. It's just like that cool breeze. The gentle breeze, which is infusing life into that. It is enough to soothe you, and it is heart soothing. As you're watching JK Sports Time, 3 for 21, as we are in over number 3. And here is the owner of 7th Streets. It is a restaurant chain in Srinagar, and some of the cottages and hotels in Pahalgam area. What a place, Pahalgam. Coming back to the game, business part underway. It's 3rd wicket. It is a 2nd for Samir Bell and 3rd one for their side. 21 for the loss of 3. Muraad needed wickets in black, and that brings the ball in at number 5. The captain comes out. He walks into the middle. He stroll out to the centre to take that responsibility. Is he going to carry forward his campaign today? Is he going to take care of Chase? Find it out on JK Sports Time. Samir Bell. Oh, he's making things tough for the batters. With a lone slip in place, Akib stands tall in the gap on offside. If the man can come in, there is a possibility of a single, and captain is underway straight away. He opened his account on a very first ball. 3 for 22. This is over number 3 we are in. They're chasing 133. They're still 111 behind. That we call the Nelson. They're behind. 3 for 22. Samir Bell. Asif Rasul. Solid in defense again. Eyeing that mid-on. Bowler goes across. Stops the ball and limits the scoring down to nil. No run taken again. The sun is back again. It is sun sometimes behind cloud, or sometimes it is just like that switched on. Samir Bell. 2 wickets for Bell. And Asif Rasul deep in crease. Unable to offer that big shot. Could only manage it to mid-off. There is no possibility of a run. Jangi Loname Aziz Waitele, Bilal, Rubashir and MS Chatu. And this is the batting to come. This is the batting to follow. They got a great depth in the batting. And Azir, if you remember, I thought out earlier on in inning number 1, they need number 6 and number 7. Stronger, and those they can rely on.
They need a pair at number 6 and number 7 to take it up the chase. What we saw last time that was in Shalabuk, when Umesh delivered that punch at the fag end and saving his side from that big loss against the likes of Sultan Warriors at Shalabuk Champions League few weeks back, if you remember that. I'm just trying to remind you and remind our beloved listeners and viewers on JK Sports Time. Well, here is Raza with a fresh serve. Akimir solid in defense again. Defensive shot offer, no run taken. Pressure is mounting, climbing. And this is what Muraad need at the moment. And they need to exert certain amount of pressure. Make the batter toil hard and play across the line and play down the wrong line. In the meantime, with a lone slip in place, Zaid continues to be there. Defensive shot, wanted single, no run taken, denied again. He's quickly onto the ball. Well, Mansoor talking of that, he's got the variety. He can use that a kind of a quicker one, the straighter one. And he's talking of that, love you buddy. Oh, that is the Akimir, inside out, bell and sheer class. And that's done the distance. What a shot, oh, audacious. Lovely, lovely timing. I call it fair and handsome. Have you heard that, fair and handsome? That is the example. It is an example set by Akimir. What does handsome mean? That was a classy overcovers. Oh, that is a wonderful 4 just because of 4 coming, 3 for 28. Flicked away onto the onside. Salim quickly onto the ball, but can't prevent that single. One more run taken. 29 for 3. We are in over number 4. चौथा ओवर 29 3 विकेट के नुकसान पे आकिब मीर और आसिफ रसूल ये जोड़ी प्रयास करते हुए। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद। अरे वसीम रजा इन प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनके पास अनुभव की कमी नहीं है। यहाँ एक और विकेट चाहिए दबाव में खड़ा करने के लिए टीम रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार को, और वहीं से रॉयल क्रिकेट क्लब को एक पार्टनरशिप की आवश्यकता। आकिब मीर और आसिफ रसूल ये 2 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में 29 पे 3 चौथे ओवर की गेंदबाजी। 133 का लक्ष्य है सामने विजयी इस ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार को। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच दर्शकों से, वो जो क्षमता है उस क्षमता के अनुकूल बना हुआ ये मैदान। हर ऐसे में जिक्र करें 29 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। आसिफ रसूल है सामने, वसीम रजा इस बार फिर अच्छी गेंद थी स्टंप्स की ओर, बड़े आत्मविश्वास के साथ खेला जरूर। मिडऑन पे गेंद फील्ड हुई, रन बनने की संभावना थी नहीं, और जानते हैं यहाँ विकेट का महत्व कितना है। ऐसे में कोई अतिरिक्त जोखिम उठाने का प्रयास करेंगे नहीं। अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त। 4 पूरे 29 3 विकेट के नुकसान पर 133 के जवाब में, और अभी भी 104 रन दूर है टीम रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार। रन के पास 7 विकेट सुरक्षित है। आने वाले बल्लेबाजों में वाहिद तेली, जहांगीर लोनो में सिद्धू, और उसके अलावा अन्य खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, रूप बशी टीम का हिस्सा है, बिलाल गाजी, और संभवतः आदिल कोहली भी टीम का हिस्सा है। तो आपके पास बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प है, पर यहाँ से गेंदबाजी की अगर बात करें तो एक बेहतरीन और शानदार गेंदबाजी चाहिए। एक साधारण और सटीक लाइन और लेंथ के साथ आपको गेंदबाजी करनी होगी, और तब जा करके आप कोई खास व्यवधान, कोई खास प्रभाव छोड़ सकते हैं। समीर बैल एक बार फिर, ये उनका आखिरी ओवर होगा संभवतः, अथवा तीसरा ओवर। 2 ओवर 9 रन 2 विकेट कमाल की गेंदबाजी समीर बैल द्वारा। ये उनके कोटे का तीसरा ओवर, पारी का 5वां। 4 के बाद 29 3 विकेट के नुकसान पर आकिब मीर के लिए। आकिब मीर ने बड़े आत्मविश्वास के साथ रक्षात्मक रूप से इस गेंद को मिडल ऑफ द बैट से टकराने पर दिया। रन बनने की संभावना थी नहीं, क्योंकि जानते हैं आकिब मीर ये वो समय है, ये वो परिस्थिति है जहां से एक बेहतरीन पारी खेलनी है। एक अच्छा स्ट्रोक पर सीधे खिलाड़ी के पास वसीम रजा न सिर्फ एक अच्छे गेंदबाज हैं बल्कि एक बेहतरीन फील्डर है। यहाँ रन बनने की संभावना नहीं थी। अब जाकर के हल्के बादल आकाश में, और वह हल्की सी राहत की सांस यहाँ आए हुए दर्शकों को। एक और बेहतर स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी है, रन नहीं मिलेगा। और यहाँ रन गति पे अंकुश लगा हुआ है, और इसी प्रकार की गेंदबाजी से ठीक एक स्टर्क लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी। रन गति पे अंकुश लगाना होगा, दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों पर। एक बेहतर और चुनौतीपूर्वक ये फाइनल मुकाबला रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का। एक और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। तो देखिए मानसिकता इस गेंदबाज की, और ज्यादा अवसर नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज आके मीर को हाथ खोलने का। ये मानसिकता गेंदबाज की बहुत बढ़िया, और कप्तानी भी बुद्धिमानी का परिचय दिए हुए इस मैच में। अब तक गेंदबाजी की अगर हम बात करें, वसीम रजा और समीर बैल से लगातार गेंदबाजी कराई है। जानते हैं कि इस विकेट पे स्पिन आक्रमण काफी
प्रयोगजनक अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कट किया गेंद को पीछे खिलाड़ी हैं सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को थ्रो समीर बल के पास पर एक सिंगल और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच गई है 30 पे 103 की आवश्यकता यहां से 5वां ओवर गेंदबाजी का मुराद 7th स्ट्रीट की टीम इस समय गेंदबाजी करती मात्र 132 रन बनाए थे 10 के 10 विकेट उनके गिरे थे और पूरे 20 ओवर में ऑल आउट हो गई थी टीम और शुरुआत खराब रही और लीजिए यह शुरुआत की आवश्यकता और वो विकेट आसिफ रसूल का और समीर बेल और निश्चित तौर पे बेल ने आज घंटी बजाई है क्या ये घंटी खतरे की घंटी होगी अथवा रही ये देखने वाली बात है चौथा विकेट 30 पे 4 taken, flicked, and it was an easy one. Wonderful goal from Wasim Raza. Gunbeater takes that one. This isn't good, and I'm not going to entertain all this. But thank you very much. You warmed me up here. I am in full mood to have Hey, come on, warm up a bit. It was just like that going on here, and we've seen that wicket. What are you doing in the com box? Hey, we have seen that follow wicket here, and it was the wicket of Asif Rasool, was taken by Wasim Raza. Was an easy one. Wonderful goal, brilliant take, makes it possible, and it's wicket number 4 down. They are 30 for the loss of 4. Crowd is loving this moment here at Pulwama Stadium. They are thrilled, excited, and excitement is sky high. And we have seen that follow wicket number 4, but that was a wonderful catch. Waitele comes in at number 6. Wicketkeeper batter Waitele, the wicketkeeper batter from South Kashmir, comes in at number 6. Losing 4 in a kind of succession. Need someone who's going to study the ship, build that partnership, put on a show, but something is lacking from Royal side at the moment is that stability. Those patience missing at the moment. Someone need to be patient there. It's 10 tall. It's the high time, and it is an opportunity. That's why we call it these games. Give rise, give birth to the stars. Heroes will rise and just bite the bullet and stand up to the occasion and step up. Show some what you possess and stand up to the occasion and display that character. What you have and what you possess, what you earned over the couple of years or throughout the decade. And you have been through these conditions plenty of times. And it's the time to prove yourself, face all the rigors, and stand up to the occasion like that of 24 karat gold, and you call that Khara Sonda. It is just like that. Well, in the meantime, it's 4 down, 30 on the board. New man comes in at number 6 is Waitele. Imtiaz lefty to operate, and lefty won that crowd cover here. Is going to produce those cutters, and sometimes he can swing the ball both ways. Here we are in over number 6, the last over mandatory power play. Muraad set 1, double 3. And in response, it's Royals. They're 4 down, just 30 on the board. Slip removed. There is short third, backward a point and offside. And there is a man at straightish point. Superb cover. And man at mid-off, Adil Dada is there. Dada can bowl. Zaid Nabi and his 4 overs are going to be crucial. Dada can use that quicker one in between the straighter one. And you can't afford going deep against Dada. And using that angle blade or that cross bat shot. Fresh over, left alone. Lets it go through into the safe hands. Skipper, captain, has picked up 776 wickets. And look at his figures. Wonderful, wow, amazing. As far as the captain is concerned, as Imtiaz lefty is concerned. The next one wanted single, could be tight. Direct hit needed. Would have been tight one. The 2 batters crossed over. Waitele will face ball number 1 from Imtiaz lefty. He's in his first over, 2 balls down in his first over. He conceded a single, and that was a tight one. Dardish Goni failed with the bat. He was undone with the beauty from Nag, and that was a wonderful goal behind stumps and sticks.
as far as the batter is concerned. Waitele does well on that occasion. Oh, what a delivery! Shot for LBW. And that appeal is turned down. It was nice in Decca, and we're just talking about that, Nazir. He's going to bring the ball back in that short moment and nip back her again. And Waitele, it was almost a goner. He's lucky to survive, gets away with that one. It's 4 down, 32 on the board. We are in over number 6. छठा ओवर और 32 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। यह लेखा जोखा इस मैच का अब तक की अगर हम बात करें। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है, हालांकि 32 4 विकेट के नुकसान पर 101 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। छठे ओवर की गेंदबाजी इम्तियाज लेफ्टी, ये पहला परिवर्तन। तीसरे गेंदबाज समीर बेल, वसीम राजा और अब इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी के आक्रमण में। जहां तक मुराद 7th स्ट्रीट का सवाल है, आकिब मीर और वाहिद तेली ये नाबाद छोड़ी। इस समय बीच मैदान में आकिब मीर सामने 32 पे 4। 6 ओवर की गेंदबाजी इम्तियाज लेफ्टी बाएं हाथ से, दांत के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप से बाहर। उस पर बल्ला अड़ाया जरूर था आकिब मीर ने, पर सीधे खिलाड़ी के पास गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन बनने की संभावना थी नहीं। अच्छी गेंदबाजी और ज्यादा बल्लेबाज की रेंज से थोड़ा दूर रखना होगा इम्तियाज लेफ्टी को, ये देखते हुए कि आकिब मीर एक बेहतरीन खिलाड़ी है और इन परिस्थितियों में वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर एक कदम आगे निकाला था। स्ट्रोक से खुश नहीं है आकिब मीर, पर जी बिल्कुल जगह बना करके खेलने का प्रयास वो कर रहे हैं, पर सफलता नहीं मिली। इम्तियाज लेफ्टी को चतुरता के साथ गेंदबाजी होती हुई 32 पे 4। 6 ओवर की गेंदबाजी। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा का फाइनल मुकाबला। इरफान सरकार के नेतृत्व में ये तीसरा एडिशन। एक सिंगल मिल जाएगा यहां पर वाहिद तेली और आकिब मीर को। एक और खाते में 33 रन संख्या। 6ठे ओवर में 33 रन बना लिए हैं और 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बिहार की टीम ने। 33 पे 4। 100 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहां से टीम को। 7.40 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। 5.30 प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं। पावर प्ले की अगर हम बात करें, बहुत ही बेहतर इस्तेमाल किया गेंदबाजों ने। 4 विकेट प्राप्त किए, जिसमें 3 समीर बेल के खाते में, 1 विकेट अन्य गेंदबाज को मिला था वसीम राजा को। और इम्तियाज लेफ्टी को पहले ओवर में मात्र 3 रन उन्हें खर्चे, सफलता नहीं मिली। एक बेहतर और शानदार क्रिकेट का मुकाबला ये फाइनल। आक्रमण, आकर्षण, विस्फोट, संघर्ष, और क्या परिणाम होगा ये देखने वाली बात होगी। और इस समय 33 विकेट के नुकसान पर 6 के बाद 7वें की शुरुआत। और क्या जाहिद नबी का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर आदिल दादा, ये देखने वाली बात होगी। संभवतः जाहिद नबी, एक और बेहतरीन स्पिन गेंदबाज और जाहिद नबी का इस्तेमाल। क्या अच्छी रणनीति है, यहाँ विकेट चाहिए। और जाहिद नबी भी एक बेहतरीन गेंदबाज है और निश्चित तौर पे हर संभव प्रयास करें, भले ही परिणाम आपके हित में आया अथवा नहीं, लेकिन यहां से आपको प्रयास करना होगा। और वो टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी मुराद 7th स्ट्रीट के लिए हर संभव प्रयास, छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल। बॉलिंग चेंज बहुत बढ़िया। 3 गेंदबाज अभी तक प्रयोग में लाए गए हैं। समीर बेल को 3 विकेट मिले हैं, 1 विकेट वसीम राजा को। इम्तियाज लेफ्टी को सफलता नहीं मिली और ये नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं जाहिद नबी, चौथे गेंदबाज। एक और परिवर्तन, क्या ये परिवर्तन रंग लाएगा? क्या यहां से वो सफलता दिला पाएंगे वाहिद तेली और आकिब मीर? वाहिद तेली एक गेंद से, आकिब मीर ने 11 बनाए, 15 गेंदें खेली। 33 पे 4। 7वें की शुरुआत। और जिधर नजर दौड़ाई जाए वहां दर्शकों से खचाखची मैदान भरा हुआ। इस फाइनल मुकाबले का आनंद लेते हुए इरफान सरकार, जो कि चेयरमैन और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा के, उनके नेतृत्व में उनकी टीम, उनकी मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन, शानदार उन्होंने अपना कार्य निभाया है सफलतापूर्वक इस टूर्नामेंट को। अब यहाँ अंतिम चरण की ओर अग्रसर लेकर के आ रहे हैं। ऐसे में नेचुरल एंटरटेनर जान साहब हमारे कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हैं और वो भी अपना कार्य बखूबी निभाते हुए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। नेवर की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पहली गेंद आकिब मीर ने सामना किया, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर जाती हुई बैकवर्ड पॉइंट की और गेंद। और जी बिल्कुल, और जान साहब जो है वो ऑर्गेनाइजर है, सर्वश्रेष्ठ ऑर्गेनाइजर है और उनका योगदान सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है किसी भी मैच में। और क्रिकेट के मैदान में जान साहब ना हो तो फिर उस मुकाबले में जान नहीं, जब जान नहीं तो जान नहीं। Single there, little uppish. Down to the double figures, below 100 required. They required 99 more runs from remaining overs with 6 wickets in kitty. Waitele, and he's got the skipper Akib Mir, Zaid Nabi in his very first over. Wide, shaping for the defensive shot.
Keeps it away onto the offside. John Saab is leaving the calm box again. But look at his energy. He's very hard-working, tenacious, stupendous. Good delivery again, soft hands. Before he could turn around, it's just like that, turning around. And the two batters crossed over, one more run. It's 4 for 35. We are in over number 7. Clouds, heavy clouds overhead. Sports Stadium Pulwama largely looming, and this will assist to the bowlers. Believe me, this is going to help the bowlers. Zaid in his very first over. He's looked good as of now. Captain knows his role very well. On to 12 of 17. They need a partnership to keep themselves in the hunt, in the chase. And their campaign alive. Wanted a single. Akimir is so quick between the wickets. Waitele says straight away, no. We can't afford one more here. We need a partnership. We can't risk. Decided against that single in the end. It's 4 down. They need a partnership on the other side bowling unit. They are really bowling well, and they're killing the batters here. What we have seen earlier on, they're going for the kill. They're just attacking with the spinners. Just 1 over from pace. It was captain who produced that solitary over. But we have seen 3 overs from Samir Bell and 2 from Wasim Raza, keeping 2 in kitty as far as Raza is concerned. 1 from Samir, and they consumed 1 from Zaid Nabi. Zaid has got 3 overs to come. Adil Dada, he's got all the 4 overs in his kitty. The captain is going to continue and he's going to carry on. John Saab is being welcomed. He's got a great response from spectators, audiences, viewers and visioners. 4 down, 36 on the board. Over number 8 is about to start. Man at fly slip, man at back with a point. Straightish point. A cover, a catching cover we can say. Back to the bowler, not for runs. A dot delivery. 2 men in the middle just trying to stabilize. Aftab Saab is here, the man from line of defense. Thank you sir for your presence. Aftab Saab, he's looking like a ball. And that one upish over the backward a point. This one is going to run away. Sped past, top the turf, into the backward point boundary for 4. And that was brought to you by Just Bukhara. There is addition in score. Welcome boundary coming after a long time. The drought comes to an end. It was a boundary drought, and he puts an end to that with a good looking shot. Deliberate one. He decided to go at it. It flies within field. It is left again. 4 for 40. Could be tight. Directed needed. And Akib Mir would have been on his way. And he is safe again. Fortune favors the brave. Bravado approach and intent from Captain D. 1 more run. It's 4 for 41 in over number 8. Listening again. Here to the crowd. They are loving every moment here at Sports Stadium Pulwama. Chasing 1-3. Team Royal Kasbiyar. Wicketkeeper goes across. Pat on the ball, close to the body. Not trying to hit hard. Just waits for the ball to come in close and lays pat on it. This is how you need to bat and you need to play. But avoid going across the line and try to understand the ball where it is. Watch the ball, tend to go after the ball. You can't afford going across the line. That is upish. He checked his shot in the end, and that saved Akime. There wasn't free flow, and he checked his shot in the end. He chipped it in the air for a while. 1 more run. It's 4 for 43. You're watching JK Sports Time Facebook. Moreover, it's live on YouTube, and we have Faisal with us, the Kashmiri person, the man who's working as an ambassador for Kashmir and presenting that art of valley and preserving that and telling the world that we love that art, and we have a lot of artisans in the valley, and he's promoting that art in Cochin, Kerala. And what a place. And people love that place from across the globe. They visit that place
like people visit Kashmir, and Cochin is also a special place, and we have that ocean around that sea, and there is a seaport, Arabian Sea, and you call that Bahir Arab, and we call that Arabian Sea. It reminds me of a few words from Mansoor, what happened on 15th of August 1947. It's over to you now, Sheikh Nazir again. भारत की स्वतंत्रता को करीब करीब 76-77 वर्ष हुए हैं और उन 77 वर्षों में अगर उपकार देखें तो उपकार का वो जीवित संस्कार और उपहार का उपकरण अभी भी जीवित है। 43 पे 4 8 के बाद और हमारे सहयोगी समझ पा रहे होंगे और उन्होंने समझा इस बात को, मंसूर अजीज ने भी। 43 4 विकेट के नुकसान पर 8 के बाद 90 रन अभी भी चाहिए यहाँ से मैच जीतने के लिए। बचे हुए 72 गेंदों से, यानी कि 12 ओवर में अब 90 रनों की आवश्यकता। पर यहाँ से 1-2 विकेट, हालांकि T20 में ये रन बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, मैं आपसे सहमत हूं। पर अगर यहाँ से 1-2 विकेट जल्दी जल्दी गंवाए टीम ने तो फिर एक चुनौती रह सकती है, कांटे की टक्कर रह सकती है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, यहाँ सभी प्रेडिक्शन फेल, ये क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। अरे काफी ज्यादा मात्रा में आज दर्शक है, क्रिकेट के प्रशंसक, क्रिकेट के चाहने वाले, प्रेमी, दीवाने इस मैच का आनंद लेने के लिए यहाँ के मीर स्पेशल है और गेंद स्टैंड्स में जस्ट बौखारा छक्का। 43 से बढ़कर 49, 4 विकेट के नुकसान पे और 6 और जोड़ लीजिए खाते में। अब 84 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। 49 रन तक पहुंच चुके। आखिर मीर का विकेट बहुत मायने रखेगा यह टीम रॉयल क्रिकेट क्लब के लिए, और वहीं पे अगर विकेट मिल जाता है मुराद 7th स्ट्रीट को तो फिर एक बेहतरीन। जी हाँ, 25 पे नाबाद है। 24 गेंदों से अगली गेंद जाहिद नबी की, इस बार फिर बैकफुट पर जाकर के बड़े आत्मविश्वास के साथ और खूबसूरती के साथ वो मानसिकता बल्लेबाज की 1 को 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं और जानते हैं कि बड़े स्ट्रोक, इससे पूर्व छक्का और अब 1 को 2 में कन्वर्ट किया, तो ये मानसिकता बल्लेबाज की और जी आपको महान बनाती है। 2 रन और खाते में। रन संख्या हो गई है 51 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ये 9वां ओवर वर्तमान में चलता हुआ रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। 51 पे 4 जी के स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल लाइव प्रसारण आप तक पहुंचा रहा है। इस फाइनल मुकाबले का दूसरी पारी में 133 बनाना है जीत के लिए। आके मीर 27-25 गेंदों से, वाहिद तेली 3-5 गेंदों से। वाहिद तेली दूसरे छोर से एक सहयोग देते हुए और समर्थन देते हुए ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार। आके मीर के लिए जाहिद अभी तिरछे रन के साथ ये गेंद, और इस बार अंतिम समय में उसको बल्ले से, तिरछे बल्ले से दिशा दे दी। 1 रन दौड़ पड़े। देखिए हम जिक्र कर रहे थे आके मीर, अरे क्यों ने मिस्टर कंसिस्टेंट कहा जाता है। एक बेहतरीन और शानदार बल्लेबाज, बुद्धिमानी का परिचय, किसी हड़बड़ाहट का परिचय नहीं दे रहे हैं। सिंगल डबल्स के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हैं और साथ में जहां पर भी खराब गेंद मिलती है उसको सही इस्तेमाल कर रहे हैं। रन संख्या पहुंच गई है 52 पे, 4 विकेट के नुकसान पे। ये 9वां ओवर वर्तमान में। एक बेहतरीन और शानदार ये पार्टनरशिप, ये साझेदारी, ये भागीदारी ये 2 बल्लेबाज निभा रहे हैं। 52 पे 4, 8.3 के बाद 9वें ओवर की ये गेंदबाजी। जाहिद नबी का ये दूसरा ओवर, 1.3 ओवर, 12 रन, विकेट नहीं मिला है। आकाश में अब बादल छाए हुए हैं और उस तापमान से कहीं न कहीं अब राहत की सांस मिलते हुए यहाँ की जनता को, इस जनसंख्या को। सरकार सप्ताह में तो जनसंख्या भी यहाँ। 52 पे 4 और 8.3 के बाद अब जाकर के एक सिंगल मिल जाएगा। 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होते हुए 53 पे 4, 9वें ओवर की गेंदबाजी। अच्छा क्रिकेट, हल्की हवाई मैदान में चलते हुए हरजिदर और नर्ज। हाँ जी बिल्कुल। देखिए ये पार्टनरशिप जो है, शुरुआत में 4 विकेट और उस पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं वो अंकुश लगा दिया उस हर्षोल्लास पे। वो जो चहलकदमी देखने को मिल रही थी, वो जो संघर्ष देखने को मिल रहा था, उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगा इस पार्टनरशिप के चलते। 52 पे 4, 9वां ओवर। जाहिद नबी सामने आके मीर, इस बार फिर देख लीजिए लेग स्टंप पर हल्के हाथों के साथ उसको खेला। वो फाइनल का इलाका खा लिया। समीर बिल को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी, जब तक वे पहुंच से गेंद को फेल करते। पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन बटोरने का। 2 और खाते में 52 से बढ़कर 54 और ये पार्टनरशिप धीरे धीरे से एक महत्वपूर्ण योगदान देते हुए इस पारी की जीत में, जहां तक रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार का सवाल है। 55 पे 4, 8.5 ओवर के बाद अंतिम गेंद का बाकी 9वां ओवर और 55 रन बन चुके हैं। 6.69 ये रिकॉर्ड रन रेट यहां से और 6.23 का रन रेट वर्तमान में। बेहतर क्रिकेट चलता हुआ, एक अच्छा क्रिकेट, हर्षोल्लास,
हर स्विच से पूर्व, लेकिन अब वो जाकर के वो सहमी सहमी सी, वो थमी थमी सी आवाज है, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक टॉनिक का काम करती है रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बिहार के लिए। एक अच्छा क्रिकेट इस बार हल्के हाथों के साथ खेला जरूर। एक सिंगल बेलता हुआ ओवर समाप्त हुआ 9 ओवर की समाप्ति के बाद। इस समय 56 4 विकेट के नुकसान पे। Silence around the center. Pin drop silence. Calmness. What a place. Cool, pleasant atmosphere. And calmness everywhere. This is what we need, isn't it? Yes. We love this peace and peaceful coexistence. Yeah, absolutely right. Look at the attendance. It looks like what we saw a few days back, or just a day before yesterday. What was going on at Mecca of cricket? Oh, the Lords. Oh, what a place. And it was a dream come true for South Africa Proteas. After almost 27 years, they lifted that ICC event. It was after hundreds of heartbreaks, finally putting across. There was an icing on the cake. And everyone, For all that people. and no doubt about that. It was this time for Africa. It was just like that. Imtiaz lefty. Back again. Look how Akimir is rotating strike. This makes him special among the masses here in the valley. He's a different kind of a character. And look, he moves on to 32 in no time. Without letting anyone know, he's building that partnership. He's building his innings. He's designing that pattern. Unbelievable, remarkable and amazing. What a character he is. That's why he's called Mr. Consistent. Standing tall, like that wall, fighting it out for his team and keeping his side in the hunt, in the chase. He beats Waitele on that occasion. It's a dot ball, and you're watching Giga Sports Time Facebook. Moreover, it's live on YouTube. Well, Nazir, talking about the sponsors, it reminds me of great commentator Uttapal Bhattacharya ji. And gone are the days. Commentary evolved, so is cricket and cricket commentary. We can talk of the sponsor, and this lad, heads up to this lad. He's earning bread, and is the message for those who are indulging in drug menace and other social evils. Say bye-bye to drugs. Look, this lad is earning the bread. Driven straight, like an arrow, over the baller's head, packed it to perfection. And that's 4. And with that, just Bukhara 4, there is addition in score. Partnership is 31 of 28 balls. It's 61 on the board. And this partnership is turning this game on its head. And the partnership is working as a catalyst. And that electrolyte, or the electrode, there are 2 electrodes in the middle. One is Akimir and he's got his partner, Waitele. Taking this game away from Muraad once again. Here is the next one, flicks it, fine. Bell gives the chase, gets to the ball. A kind of awkward bounce in the outfield. Akib added on 2 more runs here. It's 64 for the loss of 4 after the completion of 10 overs. 10 done, halfway mark. They are 4 for 64, chasing 133 from their allotted overs. 69 behind from 60 balls. Just shade of a run a ball here, Nazir. 60 balls, 69 is what they require now. To me, should be easy one with 6 of the batters in kitty. Umas yet to bat, Jangilon yet to bat. Bilal Ghazi can up the tempo. Robashir can play those cameos when required. And they have Amir Aziz. He's all-rounder, he's genuine all-rounder. He can bat, he can ball. So they have the depth in the batting. We're talking that number 6 and number 7, maybe Jack Lone and Umas Itu. The 2 batters they're going to rely on. But Akimir is never going to give up. He's going to take them as close as possible. He's going to bat deep as possible. He's going to carry on and continue. Every moment is being captured. Every moment is being captured. Nazir, you call it, when it comes to the right up, it's called Kalamband. Trying to pen down. And when it comes to the camera, we call it capturing every moment. And what do you call in Hindi? कैमरे की आंख में कैद करना। हर बहुत जल्द आप भी उस जीवन के उपसंग में कैद हो जाएंगे और हम दुआ गो हैं वो समय आ जाए।
चलिए 60 गेंदों से 69, यह इक्वेशन, यह है आंकड़ा इस मैच का। 10 ओवर की गेंदबाजी में 64 बने, 4 विकेट खोए हैं टीम ने। आगे मीर 34, वाहिद तेली 9, 10 गेंदों से। दर्शकों की एक बड़ी संख्या इस मुकाबले का आनंद लेती हुई। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो आखिरी 10 ओवर का खेल बचा है 69 रन पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 विकेट सुरक्षित और 2 सेट बैटर। आके मीर 34, 30 गेंदों से। वाहिद तेली 9। आने वाले बल्लेबाजों में उमैर सेतु, जहांगीर लोन, बिलाल गाजी, रो बशीर और आमिर अजीज। तो बल्लेबाजी में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं और डेप्थ है, और आदिल हुसैन भी संभव थे। तो आपके पास बल्लेबाजी में विकल्प हैं और बल्लेबाजी में ऑप्शन है। और यहां से जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई है, आकिब मीर ने एक बेहतरीन पारी अभी तक खेली है। वो इसमें 34 पे दाबाद है मात्र 30 गेंदों से। पर जिस प्रकार से उन संकट की परिस्थितियों से इस टीम को निकाला, सजाया, संवारा इस पारी को, और धीरे धीरे से जीत की ओर अग्रसर करके ले जा रहे हैं। हालांकि एक बेहतरीन, जी हाँ बिल्कुल, एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर उपाय, एक योजनाबद्ध तरीका उनकी बल्लेबाजी का, और जाने जाते उस बल्लेबाजी के लिए। 64 पे 4, रिक्वायर्ड रन रेट 6.60 और करंट रन रेट 6.40। ये वर्तमान की स्थिति है इस मैच की। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पापोर, एमएचएम फैशन पीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन गेट स्पोर्ट्स क्लब के HND। थैंक यू वेरी मच स्पॉन्सर्स, व्यूअर्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस लाइव प्रसारण में। जेके स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक के माध्यम से भी ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। थोड़ा सा विलंब, हालांकि ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट या ड्रिंक्स ब्रेक, ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है। हालांकि विलंब हो रहा है खेल में, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस समय भारतीय समय अनुसार 5:18, हालांकि 5:30 बजे का नियुक्त समय था इस दूसरी पारी की समाप्ति का। मात्र 12 मिनट का समय है और 10 ओवर की अभी गेंदबाजी शेष है। 69 रन और बनाने हैं टीम को, तो इस चीज़ पे कार्य करना होगा और इस चीज़ पे ध्यान देना होगा दो ऑफिशियल्स को, मैच रेफरी को, बाकी जितने भी मैनेजमेंट है, कि समय का विलंब ना किया जाए। 64 पे 4, 60 गेंदों से 69। क्या कुछ यहां से अब इस खेल में वो उपचार रहने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। आकिब मीर और वाहिद तेली ने एक बेहतरीन पार्टनरशिप निभाई अपनी टीम के लिए, और काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ दर्शकों उपलब्ध, क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने, स्पोर्ट्स लवर्स। एक अच्छा और बेहतरीन ये क्रिकेट मुकाबला, ये फाइनल मुकाबला रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा, तीसरे एडिशन का, और दूसरी पारी 133 मात्र बनाने जीत के लिए रॉयल क्रिकेट क्लब की अगर हम बात करें, शुरुआत उनकी बहुत खराब रही। इश्तियाक रसूल, आसिफ रसूल, उसके अलावा अगर हम जिक्र करें तो नासिर कुमार और एक अन्य खिलाड़ी, वो 4 विकेट शुरुआत में गंवाए, और आदिल रेशी, और उसके बाद से ये पार्टनरशिप, और आपको याद होगा 26 पे वो चौथा विकेट गिरा था, और इस समय 64 पे 4, और ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण है। करीब करीब 40 रनों की ये, जी बिल्कुल, और 24 पे चौथा विकेट गिरा था, और इस समय 40 रनों की नाबाद साझेदारी इन दो बल्लेबाजों ने निभाई है। बहुत ही बेहतरीन साझेदारी, सूझबूझ भरी पारी दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और एक बेहतर स्थिति में ला खड़ा कर दिया टीम को। ड्रिंक्स के बाद खेल दोबारा से प्रारंभ होने जा रहा है। 10 ओवर में 64 बने, 4 विकेट के नुकसान पर। अगले 10 ओवर में 69 चाहिए, 6 विकेट सुरक्षित। 10 overs are gonna come. Adil Dada pressed into service. They need one more wicket here. They need to get rid of partnership as early as possible. Running short of time. 69 away. Royal Caspiar against the likes of 7th Street Muraad Cricket Club. And you're watching Jiggy Sports Time thanks to our beloved sponsors. I start with Anthem Sports India, Fashion Feast, the Shining Star Pumper, MH multi-brand wear of Ivani. And we have Delgate Sports Club, Hamdan Hurricanes as the importers and the exporters. HND complete kids wear near Natipura, Srinagar. Back to the game again. 69 from 60. Flat bats that one. There is a man at long on who does well. Quickly onto the ball. Manzoor Dar is there. He's a gun fielder nowadays. He's working on his fitness. Chime in again and keeping himself up to the mark. As fit as fiddle. He's got a man at long off. He's got a man at long on. 2 boundary riders for Akib Mir. Here is Dada again.
Akib, look at that shot. Defensive, look at his head. And keeps it away onto the offside. Gentle tap, not trying to hit hard. He knows his role very well. And from his end, it won't be easy for Muraad to strike. He's going to keep wickets intact. Improvise. Was there an edge? We'll have to wait and watch. There was something. There was something because it is a legal ball in the end. Did it hit the pad or the bat? As far as the bowler's reaction is concerned, it come off the bat. It's come off the bat. Should have been taken. 57 balls, 67 needed. Dada. This time it's almost gone through between bat and pad, but hits him onto the pad. There was a little turn that saved Whitele. And I was talking about that, Nazir, earlier on, that straight on won't be easy to negotiate from Adil Dada. And batter need to play close to the body. Drives it straight down the ground. Possibility of a single. Taken again. They are 65 runs behind. Should be easy from Iran with 6 of the batters in kitty. Umas yet to bat. Adil Hussain to come. Jahangir Lone is waiting for his turn. And 2 of them padded in the dugout. Oh, it would have been blind. Would have been absolute blind. He stuck out his left hand, unable to hold on to the ball. And fortune favours the brave. He is luckier than Dada today. As far as Whitele is concerned, luckiest man there. Would have been easy catch, would have been simple one. It had gone down and Dada can't believe. Bit unlucky as far as Dada is concerned. Would have been wonderful response. Would have been a wonderful regulation catch. Unable to respond within time. He stuck out his hand to it, but couldn't hold on in the end. It's 4 down, 67 on the board. They're 66 more runs behind. They won in the MKT. Under the belt, under the name, under the banner of Frandus Motors in Jabalpura. It was Royal Caspiar, and it's again Royal Caspiar here. And it's going to Royal Goodwill on 22nd of June. It's going to be WCL Season 2 Grand Finale coming your way. And we are Royal Premier League round the corner. It will be played on turf wicket. Day-night games are going to come your way. And this is going to be the same venue. In next 20 days, we're going to look forward to that turf. And after the culmination of turf work, it's going to be the tournament coming your way. Tucks it on the corner. Gone fine. Call is for 2. He's running back for the second. He rushes back. There is a shot for run out and is turned down. He's home. He's safe. With that brace, it's 69 for the loss of 4. The man behind the tournament, Irfan Sarkar, is here. Walking in front of our camera here. Requesting crowd to stay beyond that boundary cushion. But in this part of the world, it's hard to convey a message and tell them, show some decency. Isn't it? And Fayaz Saab agrees. He shakes his head in approval, says, I just second your opinion. While Sarkar is requesting, even John Saab requested everyone here. 69 for the loss of 4. 64 needed from 53 balls. Akib does well again. Quickly on to that one. He blocks it away. And see, look at his hand-eye coordination. Eyes on the ball. He's trying to read him out of the hand. Oh, Sarkar. When ball is coming out of his hand, he's trying to take care of that. He's looking that one with keen observation. Keenly observing everything. It's 69 for 4. 64 needed from 50 balls. 64 रन चाहिए 53 गेंदों से. एक बेहतर और शानदार मुकाबला वर्तमान में चलता हुआ. 53 से 64. एक और अवसर बना था रन आउट का और सुरक्षित पहुंच गए वापस. आकिब बीर और वाहिद तेली एक बेहतर साझेदारी, एक चुनौती देते हुए मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम को इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में 69 रन बने हैं 4 विकेट पे. वो 24 पे चौथा विकेट और वहां से लेकर के इस साझेदारी को चले हैं दोनों बल्लेबाज और अभी तक अभिजीत हैं, नाबाद हैं दोनों बल्लेबाज. 69 पे 4. 11.4 के बाद 133 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. 50 गेंदों से 64 की आवश्यकता यहां रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार को मुराद 7th स्ट्रीट के विरुद्ध इस फाइनल मुकाबले में जीत अर्जित करने के लिए. वसीम रजा अगली गेंद हवा में स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी पर कोई अवसर नहीं. गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. जस्ट बोखारा चौका, खूबसूरत उनका प्रिय स्ट्रोक और चौका बटोर लिया. 69 से बढ़कर 73 और अब 60 रनों की आवश्यकता 49 गेंदों से. 73 पे 4.
खूबसूरत बल्लेबाजी आकिब मीर द्वारा 41 पर पहुंच चुके हैं। क्या बेहतरीन पारी, क्या शानदार बल्लेबाजी। और इस पारी के दम पर न सिर्फ दबाव से निकाला है बल्कि एक खूबसूरत तरीके से उस जीत की ओर अग्रसर करके जा रहे हैं अपनी टीम को। एक सिंगल और चहलकदमी करते हुए 73 से बढ़कर 74, 4 विकेट के नुकसान पे ओवर समाप्त हुआ। 12 समाप्त 74, 4 विकेट के नुकसान पर 48 गेंदों से 59 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 48 balls remaining, 8 overs are gonna come. The way these two batters put on a show, who would have thought that? They will bounce back. All credit to the batter, the captain of the side. He decided to come at number 5 and taken the responsibility. Even they lost the likes of Asif Rasool and Adil Rishi early today, falling cheaply. But this lad decided that I'm going to stand up. I'm going to step up. I'm going to bite the bullet. We're never going to give up. He fought like a champion. And he's still living the dream. 59 away from 48 balls. 59 away, 48 balls first ball. Look at that shot. And Akib Mir, he is a natural grafter out in the middle. I remember that last ball of that over number 12 and that inside out, that was a quality shot when he gone after that one through covers. Cover that one nicely. It is 58 needed. Little uppish. But it's gonna drop in no man's surface. Manzoor is way behind. 57 hit from 46 balls. Akib knows that his wicket is important. He's trying to put premium on his wicket. He's batting sensibly here. 43 of 40 balls. Shade over on a ball. Worked away. Tuck around. He's gonna get one for that. And look at that lad. He's like predator on the prowl. Wasim Raza. Quickly onto the ball. He runs in like that of Lafford and quickly onto the ball. 56 away, Royal Caspiar. To win this again. There is a shot and it's turned down. Crackers are going on. It's a normal thing here. Nothing special going on at the moment. Well, it's expected. Going off again. 78 for the loss of 4. 12.4, 55 away. And captain knows that. He's got a lot of responsibility on his shoulders. Now that is a quality. Scoop comes into play. Down to the fine leg for 4. Improvisation. Cleverly done. Gets full marks for that. And that was brought to you by Just Bukhara. Playing inside the line. And with that 4, it's partnership 52 between Waitil and Akib Mir. Dil scoop coming in. Douglas Marilier shot. Back away, steps, little bit leg side. Slices it away, but finds man in place, who recovered within time, but can't prevent that single. One more run taken. It's 50 needed from 42 balls. We're done with over number 13. 83 रन बन चुके हैं और ऐसे में अगर जिक्र करें तो एक अच्छी और बेहतरीन पार्टनरशिप या 50 से अधिकतम की इन दो बल्लेबाजों ने निभाई है। 7 ओवर में 50 से ये जीत के लिए 83 पे 4, 133 बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। आकिब मीर 49 पे 43 गेंदों से मात्र 1 रन दूर अपने अर्धशतक से, वो भी फाइनल मुकाबले में और इन परिस्थितियों में जबकि टीम को आवश्यकता थी उनकी और वो स्तंभ की तरह खड़े रहे। एक बेहतरीन पारी खेलते हुए अपनी टीम रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बिहार के लिए। 42 गेंदों से 50, 2 ओवर में 12 रन आदिल दादा ने खर्चे, विकेट नहीं मिला। 13 ओवर की समाप्ति में 83, 7 ओवर का खेल। भारी मात्रा में दर्शक यहां उपलब्ध जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो आने वाले सप्ताह में हालांकि बहुत सारे मुकाबले लेकर के आप तक पहुंचेंगे, पर एक और क्रिकेट का घमासान इस बार चिनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा WCL का दूसरा एडिशन फाइनल मुकाबला। एक बार फिर यही दो टीमें आपस में भिड़ंत करेंगी, पर वहां वेन्यू अलग, वो मैदान अलग। और रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब का मुकाबला मुराद 7 स्ट्रीट के साथ, और इस सीजन में चौथी बार एक दूसरे के साथ वो टकराव होगा। और निश्चित तौर पे क्या ये सीजन रहा है दोनों टीमों के लिए, पर यहाँ इतिहास बदलना होगा, यहाँ परंपरा को बदलना होगा। क्या मुराद ऐसा कर पाएगी या फिर उन्हें इंतजार करना पड़ेगा 22 जून तक। 50 चाहिए 42 गेंदों से, 83 पे 4। वाहिद दिली 13-15 गेंदों से।
और आकिब मीर 49 पे हैं। और आकिब मीर की ये काफी महत्वपूर्ण पारी, एक शानदार पारी, वो दबाव में जब 24 पे 4 विकेट गिरे थे तब बल्लेबाजी के लिए आए और न सिर्फ उस पारी को सजाया संवारा बल्कि एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया अपनी टीम को जहां से वो धीरे धीरे अब उस लक्ष्य की ओर, उस मान सम्मान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। एक बेहतरीन पारी खेली आकिब मीर ने, मात्र 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से। और यहां सलीम मीर का चयन गेंदबाजी में, और देखना होगा अब सलीम मीर क्या यहां से साझेदारी को तोड़ पाएंगे, क्या यहां से साझेदारी को तोड़ पाएंगे, यह देखना होगा। क्योंकि सलीम मीर एक बेहतरीन गेंदबाज है, हालांकि एक विकेट टेकिंग बॉलर है, पर यहां थोड़ी सी परिस्थितियां अलग प्रकार की हैं और इन परिस्थितियों में आपको विकेट प्राप्त करने होंगे, क्योंकि मात्र एक उपाय है मुराद के पास कि यहां से विकेट प्राप्त किए और लगातार अंतराल के बाद विकेट प्राप्त किए जाएं, तो फिर जाकर के एक चुनौतीपूर्वक, एक संघर्ष, एक रोमांचक स्थिति इस मुकाबले में दोबारा लौट सकती है। अन्यथा धीरे धीरे से यह मुकाबला उनके हाथ से फिसलता चला जा रहा है। फिलहाल सलीम मीर कमेंट्री बॉक्स एंड से पहली गेंद आके मीर और बाहर क्रीज छोड़कर बाहर निकले जरूर थे, पर बमुश्किल बचे सीधे स्टंप्स पे आती हुई ये गेंद मिड स्टंप पे और सीधे विकेट कीपर का दस्ताने में बगैर किसी रन के 41 से 50, 83 पे 4, 13.1 ओवर की गेंदबाजी। वाहिद तेली 13 पे 15 गेंदों से आकिब मीर 49 पे। एक बेहतरीन और शानदार पारी, एक बेहतरीन और शानदार आक्रमण अगर आज के दिन इस फाइनल मुकाबले को लेकर के बात करें। और एक और सिंगल और इसके साथ ही यहां पे 50 रन पूरे होते आकिब मीर के। शानदार बेहतरीन अर्धशतक फाइनल मुकाबले में, ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी 50 पे नाबाद 45 गेंदों से 84 पे 4, 40 गेंदों से 49 की आवश्यकता। Beautiful shot. Caressed gets 4 for that. He caresses that one and he brings up his 50. Now he decided to step down, dances down the track again. It reminds me of a great Kevin Peterson. He used it to come forward and then slapping the ball and it kicked up the surface. Then he used the vertical blade to keep it away onto the onside. 44 needed from 39 balls. 89 for 4. It was 24 for 4. It's 89 for 4. They're just running away with the scorecard here. Guided again. Little fumble. Yielded a single. Would have been more than that. But Zaid as well. He stopped with the ball. It took pace off that shot. And limiters are scoring down to 1. 43 away. 38 balls are going to come. And you're watching JK Sports Time Facebook. Moreover, it's live on YouTube. And those on YouTube, press the bell icon and subscribe to the channel. Be the part of it. Flicked away. Nicely done. Good looking shot again. Call is for 2. Should get with ease. And is back to the safety of crease. Akib Mir is so quick between the wickets. It isn't easy to run alongside Akib Mir. It reminds me of Mohammad Yusuf. He used to put his head down and started running from one end to the other. And I've seen he ran himself out and his partners 38 times. It is a record indeed in itself. And we've seen Inzamam ul Haq getting out 40 times when it comes to the run out. Arshad Butler is here. What an he's got. 92 for the loss of 4 after 14 overs. 6 overs are going to come. 36 balls remaining. 6 overs. And then 41 to walk away and to lift to the title. What's going on? Winning streak continues. On the bounce, it's always Royal Kasbiyar or the Royal Goodwill. Sam combination. Using that Sam playing 11 the pack that grew, and every day they improve and going on to lift to the trophy after trophy. One more is going to go into the cabinet today. It looks like, literally it looks like they're holding the upper hand with 6 of the batters in kitty, in the likes of Jahangir Lone, White, Jahangir Lone, and then it's going to amass it to Adil Hussain and those tail-enders who can also bat. 92 for the loss of Amir Aziz, former Ranji cricketer. He can also bat and up the sleeve when required. He can work as a pinch hitter. Huge crowd in to witness season 3 grand finale here at Pulwama. Buzzing streets. It's a buzz around the centre. Short pause in play. We're running short of time. Cut out time. It was 5:30 or 5:30. It's 35 minutes past 5. And umpires need to understand that we're running short of time. We need floodlights to be pressed into service. And light is going to fade away with the passage of time. 92 for the loss of 4.
You're watching JK Sports Time Facebook, and it's also live on YouTube. Those who want to be part of the family, subscribe to channel and press the bell icon to get notified, because in near future we will switch to YouTube, and we're also available in Play Store nowadays. You can install the app and be the part of that. And Royal Premier League is coming up. The next one is going to be massive event, and we are RCL coming up at Panditpura, and I call that Eden Park of North Kashmir. Have you been to Panditpura? And I believe that when you visit that place, you're gonna call it Eden Park. Believe me, you will call it. I know that money matters at the end of the day. Commercialization is important nowadays. But I'm talking of that venue, the lush green outfield. And we have 22nd of June, another one to remember, you guys. I'm trying to remind you, it's going to WCL Season 2, grand finale coming your way. 2 SAM teams going to be in action. But Royal Kasbiyar, it will be named as Royal Cricket Club, Royal Goodwill Cricket Club. And Royal is enjoying this season. They finished at 24 on a high, and 25 started as a bang bang here. They're winning title after title, on the bounce, on the trot. There is a message from Manzoor, the former IPL boy, and folded request is to leave the boundary cushion and just walk away. But it's hard to convey a message. It's like hard nut to crack. Have you done that, Nazir? It is a tough job. 41 needed from 36 balls. An uphill task, I call it. Tough ask. Short pause continues. Adil 50 need to understand we're running short of time here. Well, exactly. You're absolutely right. 41 needed from 36 balls. And this is the typical Hindi word combination you're using. We need that kind of vocab to equip myself. We're going to work on it with the passage of time. 41 away, 36 balls are going to come. Captain is standing tall. And this lad has decided that I'm going to fight out for my side. He's sweating out, keeping his side alive in the competition. Hopes are alive. At one stage, they were in tatters. They were in shallow waters at one stage when they lost wicket number 4 around the 24 mark, and now they are 92 for 4. These two have just steadied the ship, keeping the boat afloat and running away with the scorecard. Look, the two batters crossed over again. Good running between the wickets. You got to admire the skills. With the shot, drop at his wrist, and he's off for a quick single. 93 4 विकेट पे 35 से 40 यह है आंकड़ा, यह है इक्वेशन इस मैच की रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार के लिए। आकिब और वाहिद तेली इस समय बीच मैदान में। वाहिद तेली सामने बाएं हाथ के जाहिद नबी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल, स्टेप आउट करके लॉफ्टेड स्ट्रोक मैदान से बाहर। जस्ट बोखारा छक्का, कमाल का यह स्ट्रोक था, खूबसूरती के साथ सही समय पे मिलन होता हुआ और 6 रन अर्जित किया अपने लिए अपनी टीम के लिए। रन संख्या पहुंच गई है 99 पे, 4 विकेट के नुकसान पे। Massive strike, he comes forward, getting to the pitch of the ball. That's the simple funda behind it, and it's called extra effort. When you're batting deep in crease, you can't afford going across the line like that, because there is going to be that fly that is going to dent your confidence. That's going to put pressure on you. It won't be easy to hit that, but he comes forward and getting to the pitch of the ball and lifted it up and sends it soaring high into the sky over white mead on. There is a direct hit from Manzoor. He hits the bullseye, but to no avail. 2 more runs added on. With that brace, it is 101 on the board. 32 more runs needed to win this one. 101 4 विकेट के नुकसान पर 33 से 32 यह है इक्वेशन, यह आंकड़ा। वाहिद तेली 23 19 के दूसरे आकिब मीर 57 और आकिब मीर क्या बेहतरीन पारी खेले हैं। और इस समय हालांकि अर्धशतक पूरा करने के बाद भी 1 को 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या बेहतरीन बल्लेबाज है, क्या मानसिकता इस बल्लेबाज की। और यहाँ पर खूबसूरती के साथ हालांकि एक सिंगल मिल जाएगा वहां पर, और जब तक दोनों बल्लेबाज अपने छोर बदल लेते 1 रन और खाते में। 102 4 विकेट के नुकसान पर 31 चाहिए 32 गेंदों से इस मैच को अपने नाम करने के लिए, फाइनल खिताब अपने नाम करने के लिए रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार की टीम को। मुराद 7th स्ट्रीट की टीम तीसरी बार इस टीम के सामने
जहां तक फाइनल्स का सवाल है, चाहे वो MKT हो या फिर जबलीपोरा हो, और अब जाकर के रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा हो, सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। बड़ी चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाज, और जानते हैं कि अब यहाँ से आत्मविश्वास के साथ सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए इस लक्ष्य तक आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। वो कार्य दोनों बल्लेबाज ने बात हुई 103 पे 4, 31 गेंदों से 30 रनों की आवश्यकता, 133 बनाने हैं। जाहिद अभी 2.5 ओवर 27 रन, विकेट नहीं मिला है। ऑफ स्टंप पर ये गेंद नीचे रहती है, यहां पर आउट करार दिया गया और अंदरूनी भाग संभवतः लगती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में कैच लपक लिया गया और अंततः 103 पे 5वां विकेट गंवाया है। और आखिरी 5 ओवर का खेल, 15 समाप्त, 103 5 विकेट के नुकसान पे 30 से 30 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। Break through after ages, after long time. I think it's too late, but it has been well said. Better late than never. And it reminds me of a few words from Sidhu. अब क्या पछतावे जब चिड़िया चुग गई खेत. Well, it is 103 for the loss of 5. Half their side back to Hut. Waithili, the latest casualty as far as Royal Caspiar is concerned. And who's going to come in at number 7? Wait a while. Jack or Umesitu? Looks like Umes comes in at number 7. They are 30 away from 30 balls. It's a kind of a tie. 30 from 30. Run a ball. Run a ball will do it easily for Royal Caspiar. Ballers need pinpoint accuracy to hit the right lines, right lengths. 12 batters, contend batters, dry up runs, even singles. You can't afford any bad ball here. That's going to cost you heavily. That's going to simply drag you away. That's going to push you away from the game and that title, which is at stake. Short pause in play. Umas comes in at number 7. You're watching JK Sports Time Facebook. It's moreover live on YouTube. Those who are watching YouTube, subscribe to our channel and press the bell icon. And be the part of JK Sports Time. And those who want to enhance themselves with Sports Time and just support eyes, then try to install the app which is in Play Store nowadays. And someone will come in and talk about that. What does Sport Eyes mean? Well, it is 103 for the loss of 5. 30 needed from 30 balls. Equip yourselves with JK Sports Time across all the social media networking sites. We are on WhatsApp. We are on YouTube. We are on Facebook. Instagram. Short pause in play. New man comes in at number 7. It's Umas Itu. In at 7. Ground stop is working very hard. But there is no response from visitors here. They're not ready to respond. 103 for 5. 30 needed from 30 balls. Raza into the attack. Akib right on top of that one. He's gonna get 1 for that. Down to 29 from 29 balls. 29 गेंदों से 29 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 104 5 विकेट के नुकसान पर उमेश सिद्धू और आकिब मीर की जोड़ी भी मैदान में। आकिब मीर नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है, उमेश सामना करने के लिए तैयार। वसीम रजा, यह आखिरी ओवर है वसीम रजा का संभव थे और बेहतर गेंदबाजी उन्होंने की है इससे पूर्व। पर अब जब मात्र 29 गेंदों से 29 रनों की आवश्यकता यहाँ पर टीम को, जहाँ तक का सवाल है रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार का। अगली गेंद और इस बार उमेश ने बड़ा प्रहार किया था पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद सीधी रहती हुई नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। 28 गेंदों से 29 की आवश्यकता, 104 5 विकेट के नुकसान पे 15.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये आक्रमण, ये क्रिकेट का फाइनल मुकाबला। और यहाँ उमेश ने गेंद की पिच तक पहुंचते हुए हल्के हाथों के साथ ऑफसाइड में गेंद को खेला। एक सिंगल के लिए 1 रन और खाते में। और अब 27 गेंदों से 28 की आवश्यकता, 105 5 विकेट के नुकसान पे 16वां ओवर वर्तमान में रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा। और फाइनल मुकाबला 105 पे 5, 27 से 28 की आवश्यकता। 3.3 ओवर 29 रन 1 विकेट। गेंदबाजी विश्लेषण वसीम रजा का बाएं हाथ से। इस बार आके मीर के बल्ले से स्ट्रोक बेहतर है, कुछ रन जरूर मिलेंगे। 1 रन पूरा किया और केवल 1 रन से ही संतुष्ट। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, 1 रन और खाते में 106 5 विकेट के नुकसान पर अच्छी बल्लेबाजी आखिर मीर द्वारा। 60 पे नाबाद है 51 गेंदों से, 26 गेंदों से 27 की आवश्यकता। 106 5 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में, 16वें ओवर में क्षमा कीजिएगा
और इस बार मैच के लिए अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ से रखते हुए अच्छी गेंदबाजी वसीम राजा की, और आसान नहीं है उनके बाद उस प्रकार के स्ट्रोक लेना। हालांकि कुछ बेहतर स्ट्रोक आकिमीर ने जरूर खेले थे। उनके बाद उमेश 1 पे 3 गेंदों से 60, 51 गेंदों से आकिमीर, 25 गेंदों से 27 चाहिए। अंतिम गेंद वसीम राजा की, अरे अंतिम गेंद पर रन नहीं आएगा। सीधे इम्तियाज लेफ्टी के पास गेंद को फील्ड कर लिया गया। ओवर की अंतिम गेंद पे रन नहीं आया। ओवर समाप्त हुआ, 16 समाप्त, 106 5 विकेट के नुकसान पे 24 से 27 मैच जीतने के लिए। 4 overs remaining. Final punch awaits all of us. Looks like Royal Caspiar game to lose. It's their game to lose. 106 for 5, 27 away. Jan Saab busy at the moment. Look at the crowd on that portion. Manifold, unbelievable scenes. It is something special, and hope we're gonna witness more than this on 22nd of June. 27 hit from 24 balls. Exactly, absolutely right. Nice observation, good awareness of the game. And it is just like Jan Saab is going boom boom and doom doom. It is just like that. And look at his beautiful body. And that walk, it is just like that on a green carpet. 106 for 5, 27 away. 24 balls are going to come. Akimir on to 60 or 51. Crowd on their toes. As Royal Caspiar are getting closer to that dream figure of 133. Manzoor quickly onto the ball. Can't prevent that second run. He's so quick on the field, but can't stop that second run. With that brace, it's 108. 3.1. No matter. 1 for 29. Zaid Nabi. Wicketless today. Well, look at that noise. That voice. It isn't like that, the one you love to listen and hear. That is oohs and ahs, Nazi. It was a bit awkward. The next one, oh, look at that. Reverse sweep, isn't happy. Punches his bat. He wanted more than on that occasion. It deserved something special on that occasion, but he found his man on edge of the circle, denied any possibility for run. 25 8, 22 balls are going to come. Zaid Nabi leaves the station again. Flight and offer. Akimir. It is high in the air and all the way along gone. Just before a maximum. What a connection. It flies. It goes the distance. Gone again. 6 more. 19 needed from 21 balls. It's down to 19. It's come down to 19 for Royal Caspiar. Their captain is on top at the moment. He's on 68. He gives himself charge. Gearing up to find that top tier. As he is going after the bowlers in some style, in nice fashion. Little uppish over the bowler set. Call is for 2. Irfan quickly onto the ball and wait on is the call from skipper. One more run. 18 needed from 20 balls. अच्छा क्रिकेट, बेहतर क्रिकेट, और 20 गेंदों से 18 की आवश्यकता। 115 पे 5, 16.4 के बाद जाहिद नबी गेंदबाजी कर रहे हो। अमित उमेश सिद्धू के लिए, और पूरी तरह से वहां पर चकवा दिया और साफ बोल्ड हो गए, और इस प्रकार से उमेश की पारी हो गई समाप्त। ये छठा विकेट 115 पे गंवाया है 16.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। 19 गेंदों से 18 की आवश्यकता, और अब जाकर के दर्शकों का शोर गूंजता हुआ और जहांगीर लोन मैदान से नमूदार हुआ है। और इन परिस्थितियों में हालांकि उतना ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और पिछले मुकाबले में अगर बात करें, यहाँ इस मुकाबले में पूरी तरह से वो फेल हुए थे, और यहाँ आज इस बड़े मुकाबले में अब जीत के लिए मात्र 18 रनों की आवश्यकता, और उनका आक्रमण हुआ है। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो एक बेहतर और शानदार क्रिकेट का मुकाबला वर्तमान में चलता हुआ। और मुराद क्रिकेट क्लब की अगर हम बात करें, बहुत ही बेहतर क्रिकेट उन्होंने खेली। हालांकि 133 रनों का लक्ष्य, और जब आपके सामने इश्तियाक रसूल, आसिफ रसूल, आदिल रेशी, उमैस सिद्धू, नासिर कुमार, जहांगीर लोन, वाहिद तेली जैसे बल्लेबाज हो, तो फिर 133 तक इस प्रकार से आक्रमण करवाना और उनसे फिर इस प्रकार का वो औपचारिक प्रहार करवाना, मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया खेल।
यह अलग बात है कि परिणाम उनके हित में नहीं गया, पर बेहतर क्रिकेट खेली आज मुराद ने। निश्चित तौर पे 133 तक पहुंचते निश्चित तौर पे और उपहार का वो समीकरण करवाया है आज रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे की गेंदबाजी को और उनकी बल्लेबाजी को। 115 5 विकेट के नुकसान पे यहाँ 6 विकेट गिरे हैं। जी हाँ, और देखा जाए तो अब जहांगीर लोन बीच मैदान में मात्र 18 रनों की आवश्यकता। 115 पे 6, 19 गेंदों से 18 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और वो आखिरी ऐतिहासिक रन क्या जहांगीर लोन के बल्ले से निकलेंगे अथवा आकिब मीर के, क्योंकि 69 पे नाबाद है 55 गेंदों से। पर यहाँ जितनी भी प्रशंसा की जाए आकिब मीर की उतने काम। दबाव में वो पारी खेली, सजाया संवारा पारी को और टीम को जीत की दहलीज तक ले पहुंचे हैं। एक बेहतरीन पारी खेली आकिब मीर ने और सहयोग किया है वाहिद तेली ने। और उसके बाद दुबई सिद्धू ने भी कुछ समर्थन जरूर दिया। जहांगीर लोन सामने, जाहिद नबी की ये गेंद और इस बार जहांगीर लोन ने पहली गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला था। वहां पर फील्डिंग वसीम रजा, और वसीम रजा को बेदना आसान नहीं रहता है। अंतिम गेंद पर रन नहीं आया। ओवर समाप्त, 17 पूरे, 115 पे 6, 18 गेंदों से 18 रन चाहिए। See that scare cut from Jahangir Lone on his arrival. It reminds me of teenage days of Jack Lone. Shaping for that scare cut. Leg spat on it. Cut away nicely. Find his man on edge of the circle. You're watching Diggy Sports Time. It's 18 needed from 18 balls. Muraad need miracle to win this one and to walk away with that beautiful silverware and those dollars. They need miracle to prevail in the game. And it is 80 needed from 18 balls. 115 on the board for the loss of 6. Well, Fayaz Sabir, thank you sir for your presence. He's come all the way from Cochin, Kerala to watch the final here at Pulwama, Sports Stadium Pulwama. He's hosting Royal Knockout Cricket Tournament Grand Finale Season 3. Well, those who are watching VP Pool on YouTube, subscribe and press the bell icon. Exactly. You're going to receive those notifications in abundance. 18 need from 18. Time for bell to again. He's pressed into service at the back end. 3 overs, 3 wickets, and you can see just 10 runs. Samir Bell to operate. 18 of 18. Run a ball. It's their game to lose. Bell bowled really well today. Is he going to help his side with one more here? Captain is on to 69. One-man army. What a show and what a character he has shown today. Displayed here at the centre. 18 from 18. Now look at that shot. 90-degree elbow you call it. And I call it hold to the pose for a while. And there is a man at long on who does mop up. But none before Akib scamper through. 17 of 17. Crowd on their toes. 17 from 17. Akimir, one man, standing tall and scored 70 from 56 balls. An innings of calmness, full of composure and class. It was filled with excitement, joy and jubilation, timing and that balance. The class of Akimir, 17 of 17. It's class of Akimir and I call it Jackass. And it was wonderful show. 116 for the loss of 6. 17 away from winning this one. There is a fly slip in place. Jack Lone off with the bat face. Is off strike with that single. 16 needed from 16. And as he earlier run thrown out. We're waiting for who will finish the game. Who's going to use those finishing touches to take the side over the line, Akib or Jahangir Lone? Thank you all the beloved listeners, viewers. Thanks a million and billion. We're indebted to your love and support. Little uppish, close of the bat face. Early call is for 2. Jack isn't going to come back for the second. 15 from 15. 117 on the board. Those who are watching YouTube, subscribe and press the bell icon. We're also available in Play Store nowadays. Get there and install the app. And remember, 22nd of June, it's going to be WCL final coming your way.
And brace yourselves, get ready, tighten the seat belts and board flight. Early morning on 22nd of June. And look at that one. Trademark, traditional, conventional. Behind scare on the on. That's 4. And that was brought to you by Just Bukhara. 15 needed. Is it 15 or 11 needed? Let me confirm. I think 11 needed. Just 11 away. 14 balls are going to come. Jack Lone with that boundary. He's on to 5. 71 to Akimir. 11 needed from 14. What Jack is going to do? Crowd on their toes. At one stage it looked like this one is going to go to the lost ball. Look at that again. Oh, what's going on with Jack Lone? Looks like different character today. Out in the middle again. Open at the bat face, showing that 90-degree elbow again. आज वो उस रंग में जरूर दिखे है, हालांकि उतना ज्यादा अवसर नहीं बल्ले बल्लेबाजी का, पर 11 रन चाहिए 14 गेंदों से समीर बैल। और एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक जहांगीर लोन के बल्ले से। हर गेंद वहां पर हालांकि फील्ड कर ली गई। एक सिंगल मिलता हुआ जहांगीर लोन को। 1 रन और खाते में 123, 1, 2, 3, 6 विकेट के नुकसान पे 10 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 13 निश्चित तौर पे ओवर समाप्त हुआ है और 12 गेंदों से 10 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। ये संघर्ष आज देखने को मिला। हालांकि मुराद की टीम आज उस प्रकार का प्रदर्शन कर नहीं पाई, मात्र 132 तक सीमित रही 20 ओवर में। 12 गेंदों से 10 रन। पर परिणाम कुछ भी हो, लेकिन क्रिकेट दूसरे इस पारी में भी बेहतर खेला है, क्योंकि मात्र 12 गेंदें बचे और एक समय में ऐसा प्रतीत हो रहा था उस बल्लेबाजी को देख करके कि शायद 8-10 ओवर के भीतर ही ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा। पर जो शुरुआत उन्हें मिली, जो बेहतर क्रिकेट उन्हें खेला, हाँ ये अलग प्रकार के उतना बड़ा लक्ष्य था नहीं, उस प्रकार का दबाव था नहीं, फिर भी क्रिकेट बेहतर खेला और ये परंपरा को तोड़ नहीं पाए, उस इतिहास को बदल नहीं पाए, क्योंकि ये तीसरी हार होगी वो फाइनल मुकाबले में रॉयल क्रिकेट क्लब के सामने। और MKT फ्रेंड्स वोटर्स नारबल जबलीपुरा रॉयल क्रिकेट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। You mean it takes time to script history? It took 27 years. Pro Tees. Let's see how much time it's going to take Muraad to turn the tide. They have another chance on 2nd of June. बिल्कुल 22 तक अब प्रतीक्षा करनी होगी एक बार फिर मुराद 7 स्ट्रीट की टीम को। रॉयल गुडविल के सामने वो एक बार फिर चुनौती रखेंगे। 22 जून को वुलर क्रिकेट लीग दूसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला। 12 गेंदों से 10 रनों की आवश्यकता, 123, 6 विकेट के नुकसान पे। और ऐसे में आखिरी 2 ओवर का खेल। आकिब मीर 71 पे 57 गेंदों से और जहांगीर लोन ने 8 रन बनाए हैं, 6 रन बनाए हैं, 5 गेंदें उन्होंने खेली हैं। आखिरी 2 ओवर, 12 गेंदें और 10 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। थैंक यू वेरी मच जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहे यूट्यूब चैनल के साथ या फिर जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना प्यार, विचार, समर्थन, सहयोग देने के लिए, अपने विचारधारा हमारे साथ साझा करने के लिए। आखिरी 2 ओवर का खेल बचा है। जहांगीर लोन सामने, 12 गेंदों से 10 रनों की आवश्यकता। ऐसे में देखा जाए तो आकिब मीर नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं, पर जहांगीर लोन सामने है। 12 गेंदों से 10 रनों की आवश्यकता। निश्चित तौर पे यह मुकाबला बा अंतिम पड़ाव की और सलीम मीर पहली गेंद लेकर जो ऑप्शन से बाहर, उसका पीछा जरूर किया था जहांगीर लोन ने, पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं और गेंद जाता भाई विकेट कीपर के दस्ताने में। जी हाँ, अलग प्रकार का उनका व्यवहार था इस स्ट्रोक को खेलने का। और अब 11 गेंदों से 10 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। भारी मात्रा में दर्शक अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आनंद ले रहे हैं रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के इस फाइनल मुकाबले के अंतिम चरण का। सलीम में 11 गेंदों से 10 की आवश्यकता और जहांगीर लोन नाला के शरीर पे टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, सिंगल मिल जाएगा। और ऐसे में 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 9 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 124 पे 6, 9 रन चाहिए जीत के लिए। Just 9 away. 124 for the loss of 6. Jack Lone surprised on that occasion. Salimir hitting the deck hard. It kicks off the surface and jumps on him, hurries on him. Abrupt bounce on that occasion. He gets away with that one in the end. He's lucky and he's happy to walk away. Captain on strike. 9 away. 10 balls are gonna come. Miracle is going to be the only thing that's gonna save Muraad today. Muraad gonna wait. Their fans, you're gonna wait again. Come again on 22nd of June. It's hard luck again. Gonna go your way. It looks like didn't go right for you guys. No doubt about that. 9 away, but they have 4 wickets in kitty. They are the favorites here.
But that's a good delivery again. That is something special from Salim here. But a quality delivery again. It's 9 from 9. Yeah, I know that cricket is the game of glorious uncertainties. But it looks like that they're holding the upper hand. There are enough resources to come. They need just 1 or 2 bad balls to script history again and to walk away. But you know that cricket can turn the tide. It can turn it on its head. So we can't say that it's all over. It's done and dusted. So we're going to wait for the next 9 balls until the last ball is non-bowled. This game isn't over. No doubt about that. But credit to their side too, the way they fought today. Having just 132 on the board. Then coming back like this, it was a wonderful performance within the power play. They removed 4 of the quality batters. Their cream sent packing, but they are all the 11 guns in the lineup. There is a man. There is a man that's gone in the gap, and it's into the boundary for 4. Short arm jab. A quality shot again, rises to the cage and just because of 4. 5 needed from 8 balls. 5 needed. 4 to level the scores. And 5 to walk away with another trophy for this season. Crowd is within the boundary cushion there. No discipline at all. 5 needed from 8 balls. Salim again. It's wide up the off. It's going to be wide signal from umpire there. Now just 4 away from 8 balls. 4 needed. It looks like that Muraad gonna wait for the next turn. They have an opportunity on cards on 22nd of June. So they need to come back hard and stronger that time round. Here is Salim again. Oh, that one uppercut. There is a man, but it's gone wide of the man, a third man. And it's Royal Caspiara, the champions of Royal Knockout T20 cricket tournament. Crowd thronged onto the field. They are jubilant at the moment. The jubilation and the joy, excitement. They rise to the cage and they're the champions again. अकेले दम पर ये पारी खेली आके मेर के लिए और मैं कुछ पंक्तियां जरूर कहूँगा कि लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हजूम मिल जाए वफादार एक शख्स तो बहुत है। बहुत ही बेहतरीन पारी खेली आज आके मीर ने और अपनी टीम को वो ऐतिहासिक क्षण याद दिलाए, वो ऐतिहासिक क्षण अपने नाम करवाए, वो ट्रॉफी अपने नाम करवाई, वो खिताब अपने नाम कर पाए और इस प्रकार से रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के 30वें एडिशन की चैंपियन बनी है रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार की टीम। एक बेहतरीन शानदार क्रिकेट, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट। ये समय है अपने श्रोताओं से विदा लेने, धन्यवाद करना चाहेंगे। ये समय है रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट। बाय बाय पुलवामा। Thank you very much, and that's the news from the center. Royal Caspiar are the champions again. It didn't go right for Muraad once again. Come back on 22nd and try your luck again. You have an opportunity, but this time round it's bye-bye and tata and adieu from our side. Assalamu alaikum and fi amanillah.